ऐसा विचार आया कि बाबा के तो न तो घर द्वार है और न इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला ही है। वो स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं। अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि ये आटा वो हम सब लोगों में वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न हो रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने छक्की को हटाकर आटे का 4 समान भाग में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जादार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव के मेढ़ सीमा पर बिखेर कर आओ। मैंने श्रीनिवासियों के से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में तात्पर्य क्या है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में बिसुची का हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन बिसुची का हैजा था जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विसुचिका का संक्रमता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विसुचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना का बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला का चिंतन कर तो ये मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोग को विदित है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। श्रीनिवासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु उससे अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का प्रयास गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में ऊपर का पाट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वो पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाता, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूं। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथ समर्पणमस्तु। शुभ
शुभम भवतु। ओम शांति शांति। बैठिए। Chapter 2. Objective of writing the work, incapacity and boldness in the undertaking, the heated discussion, conferring the significant and prophetic title of Hemad Panth, and the necessity of a guru. Objective of writing the work. In the first chapter, I described Sai Baba's miracle of checking and destroying the epidemic of cholera by grinding wheat and throwing the flour on the outskirts of the village. I also heard about some miracles of Sai Baba to my great delight, and this delight inspired me to write this poetic work. I also thought about the description of these grand miracles would be interesting and instructive to Baba's devotees and would destroy their sins. So I began to write about the sacred life and teachings of Sai Baba. The life of a saint is neither logical nor dialectical. It shows us the true and great path. Incapacity and boldness in the undertaking of the work. Hemad Panth initially believed that he was not fit to undertake this work. He said, "I do not know the life of my intimate friend, and nor do I even know my own mind. Then how can I write the life of a saint or describe the nature of incarnations which even the Vedas are unable to do? One must be a saint himself before he could know other saints. Then how can I describe their glory? And to write about the life of a saint is the most difficult of undertakings. One may as well measure the depth of the water of the seven seas or enclose the sky with cloth. I knew that this was the most venturous of undertakings and that it would expose me to ridicule. I therefore invoked Sai Baba's grace." The most famous poet saint of Maharashtra, Sri Jnaneshwar Maharaj, has stated that the Lord loves those who write about the lives of saints. The saints also have a peculiar method of getting this service, which the devotees long for, successfully accomplished. The saints inspire the work, and the devotee becomes merely an indirect cause or instrument to achieve this end. For instance, in 1700 Shaka year, the poet Mahipati aspired to write about the lives of saints. Saints inspired him and got the work done. Similarly, in 1800 Shaka year, Das Ganu's service was accepted. The latter wrote 4 works: Bhakta Vijaya, Shanta Vijaya, Bhakta Leelamrita, and Shanta Kathamrita. In chapters 31, 32, and 33 of Bhakta Leelamrita, and in chapter 57 of Santa Kathamrit, the sweet life and teachings of Sai Baba are very well depicted. These have been separately published in the Sai Leela magazine. The readers are requested to read these chapters. Sai Baba's wonderful Leelas are also described in a small book named Sri Sai Nath Bhajanamala by Mrs. Savitri Bai Raghunath Tendulkar of Bandra. Dasganu Maharaj has also composed various sweet poems on Sai Baba. A devotee named Amidas Bhavani Mehta has also published some stories about Baba in Gujarati. A few editions of Sainath Prabha, a magazine produced by Dakshina Bhiksha Samsthan of Shirdi, have also been published. Then one might ask the question, since so many works regarding Sai Baba exist, why should this Satcharitra be written, and what is its necessity? The answer is plain and simple. The life of Sai Baba is as wide and deep as the infinite ocean, and everyone can dive deep into it and take out precious gems of knowledge and devotion and distribute them to the aspiring public. The stories, parables, and teachings of Sai Baba are indeed wonderful. They will give peace and happiness to people who are afflicted with sorrows and heavily loaded with the misery of this worldly existence, and will
also bestow knowledge and wisdom both in the worldly and spiritual domains. If these teachings of Sai Baba, which are as interesting and instructive as Vedic lore, are listened to and meditated upon, the devotees will get what they long for: union with Brahman, mastery in eightfold yoga, bliss of meditation, etc. So I thought I should compile these stories, and thus that should be my best service. The collection would be delightful to these simple souls whose eyes are not blessed with Sai Baba's darshan. So I set about collecting Sai Baba's teachings and expressions, the outcome of his boundless and natural self-realization. It was Sai Baba who inspired me in this matter. In fact, I surrendered my ego at his feet, thought that my path was clear and that he should make me quite happy here and in the next world. I could not ask Sai Baba to give me permission for this work. So I requested Mr. Madhavrao Deshpande, alias Shama, Baba's most intimate devotee, to speak to him for me. He pleaded for my cause and said to Sai Baba, "This Anna Sahib wishes to write your biography, so you don't say that you are a poor begging fakir and that there is no need to write it. Instead, if you agree and help him, your feet, grace, will accomplish the work. Without your consent and blessings, nothing can be done successfully." When Sai Baba heard this request, he was moved and blessed me by giving his udi, sacred ashes, and placing his boon-bestowing hand on my head and said, "Let him make a collection of my stories and experiences and keep notes and memos. I will help him. He is only an outward instrument. I shall myself write my autobiography and satisfy the wishes of my devotees. He should get rid of his ego and surrender it at my feet. He who acts like this in life, him I help the most. And about my life stories, I serve him in his house in all possible ways. When his ego is completely annihilated and no trace of it remains, I myself shall enter into him and shall write about my own life. Hearing my stories and teachings will create faith in devotees' hearts, and they will easily get self-realization and bliss. Let there be no insistence of establishing one's own view, no attempt to refute others' opinions, and no discussions of pros and cons of any subject." The word discussion reminded me of my promise to explain the story behind my receiving the title Hemad Pant. And now I shall relate this story. I was very friendly with Kaka Sahib Dikshit and Nana Sahib Chandorkar. They pressed me to go to Shirdi and receive Baba's darshan, and I promised them to do so. Something happened meanwhile which prevented me from going to Shirdi. The son of a friend fell ill. My friend tried all possible means, physical and spiritual, but the fear would not abate. At length, he got his guru to sit by the side of his son's bed, but that too was of no avail. Hearing this, I thought to myself, what is the utility of the guru if he cannot save his friend's son? If the guru cannot do anything for us, why should I go to Shirdi at all? Thinking in this way, I postponed my Shirdi trip. But the inevitable must happen, and it happened in my case as follows. Mr. Nana Sahib Chandorkar was going on tour to Besan. From Thana, he came to Dadar, and he was waiting for a train bound to Besan. In the meanwhile, a Bandra train arrived. He sat in it and came to Bandra and sent for me and took me to task for putting off my Shirdi trip. Nana's argument in favor of my Shirdi trip was convincing and delightful, so I decided to start for Shirdi the same night. I packed my luggage and started for Shirdi. I planned to go to Dadar and from there to catch the train for Manmad, and so I booked myself a ticket to Dadar and sat in the train. As the train was about to start, a Muslim man came hastily to my compartment and, seeing all my paraphernalia, asked me where I'm going. I told him my plan. He then suggested that I should go straight to Bori Bandar and not get down at Dadar, for the Manmad mail did not stop at Dadar at all. If this little miracle had not happened, I would not have reached Shirdi the next day as desired, and many doubts would have assailed me. But that was not to be. As fortune favored me, I reached Shirdi the next day at 10 a.m. Kaka Dikshit was waiting for me there. This was in 1910,
and there was only one place, Sate's Wada, for lodging pilgrim devotees. After alighting from the Tanga, a small horse-drawn carriage, I was anxious to receive darshan. And when the great devotee Tatya Sahib Nulkar returned from the masjid, he said that Sai Baba was at the corner of the Wada and that should first receive Baba's preliminary darshan and then, after a bath, see him at leisure. Hearing this, I ran and prostrated before Baba and my joy knew no bounds. I found more than what Nana Chandorkar had told me about. All my senses were satisfied and I forgot thirst and hunger. The moment I touched Sai Baba's feet, I began a new lease of life. I felt obligated to those who spurred me on and helped me to receive darshan, and I considered them my real relatives. I can never repay their debt. I can only remember them and prostrate mentally before them. The peculiarity of receiving Sai Baba's darshan, as I discovered, is that by receiving his darshan, our thoughts are changed. The force of previous actions is abated, and gradually, non-attachment or dispassion towards worldly objects grows. It is by the merit of actions in many past births that such darshan is attained. And if you see Baba, the entire world becomes or assumes the form of Sai Baba. The heated discussion. The day I arrived in Shirdi, there was an argument between myself and Bala Saheb Bhatte who regarding the necessity of a guru. I contended, why should we lose our freedom and submit to others? When we have to do our duty, why is a guru necessary? One must try his best and save himself. What can the guru do for a man who does nothing but sleeps indolently? And Mr. Bhatte took up the other side and said, whatever is bound to happen must happen. Even great men have failed. Man proposes one way, but God disposes the other way. Brush aside your cleverness. Pride or egoism won't help you. This discussion, with all its pros and cons, went on for an hour, and as usual, we did not arrive at a decision. We had to stop the discussion ultimately as we were both exhausted. The net result was that I lost my peace of mind and discovered that unless there is a strong body consciousness and egoism, there will be no argument. In other words, it is egoism that which breeds arguments. The significant and prophetic title. When we went later to the masjid, Baba asked Kaka Sahib Dikshit, what was going on in the Wada? What was the discussion about? And staring at me, Baba said, what did this Hemad Pant say? Hearing these words, I was surprised, since the masjid was at a considerable distance from Sate's Wada, where the discussion happened. How could Baba know about our discussion? Unless he was omniscient and the inner ruler of all of us. I began to wonder why Sai Baba would call me by the name Hemad Pant. This word is a shortened version of the name Hemadri Pant. Hemadri Pant was a well-known minister of the kings Mahadev and Ramdev of Devgiri of the Yadav dynasty. He was very learned, good-natured, and the author of works such as Chaturvarga Chintamani, which dealt with spiritual subjects, and Raj Prashasti, which he invented and started new methods of accounting and was the originator of the Modi Marathi shorthand script. But I was quite the opposite, an ignoramus of dull and mediocre intellect. So I could not understand why the name was conferred upon me. But upon thinking seriously about it, I thought the title was a dart to destroy my ego, so that I would always remain meek and humble. It was also a compliment paid to me for my skill in the argument. When we look at things in retrospect, we know that Baba's calling Mr. Dhabulkar by the name Hemad Pant was significant and prophetic. As future years showed, he looked after the management of the Sai Samsthan very intelligently and maintained its accounts professionally. He was also the author of such a good work, the Sai Satcharitra, which deals with the important spiritual aspects such as jnana, bhakti, dispassion, self-surrender, and self-realization. About the necessity of a guru, Hemad Pant left no note or memo about what Baba said regarding this subject. But Kaka
Sahib Dikshit has published his notes regarding this matter. The day after Hematpan's first meeting with Sai Baba, Kaka Sahib went to Baba and asked whether he should leave Shirdi. Baba said yes. Then someone asked, Baba, where should he go? Baba replied, high up. Then the man asked, how is the way that leads there? Baba said, there are many ways leading there. There is one from here too, Shirdi. The way that begins here is difficult. There are tigers and wolves in the jungles on the way. Kaka Sahib then asked, but Baba, what if we take a guide with us? Baba answered, then there is no difficulty. The guide will take you straight to your destination, avoiding wolves, tigers and ditches on the way. If there is no guide, there is the danger of your being lost in the jungle or falling into the ditches. Mr. Dabolkar was present on this occasion and he thought that this was the answer Baba gave to the question about whether a guru was necessary. Thus, he took the hint that no discussion of the question whether man is free or bound is of any use in spiritual matters. On the contrary, real Paramartha is possible only as a result of the teachings of the Guru. This is illustrated by the examples of the great avatars like Rama and Krishna, who had to submit themselves to their gurus, Vasishtha and Sandipani respectively, to attain self-realization. Therefore, the only virtues necessary for such progress are faith and patience. Bow to Shirdi Sai, peace be to all. Sai Satcharitra, Chapter 3. Sai Baba's sanction and promise, assignment of work to devotees, Baba's stories as a beacon light, his motherly love, Rohila's story, and his sweet and nectar-like words. Sai Baba's sanction and promise. As described in the previous chapter, Sai Baba gave his complete approval for the writing of the Satcharitra and said, I fully agree with you regarding the writing of the Satcharitra. You do your duty, don't be afraid in the least. Keep your mind steady and have faith in my words. If my leelas are written, ignorance will vanish, and if they are attentively and devoutly listened to, the consciousness of worldly existence will abate, and strong waves of love and devotion will rise. If one dives deep into my leelas, he will get precious jewels of knowledge. Hearing thus, the author was very pleased, and he at once became fearless and confident and thought his work was bound to be a success. Then, turning to Shama, mother of Deshpande, Sai Baba said, if a man remembers my name with love, I shall fulfill all his wishes and increase his devotion. And if he sings earnestly my life and my deeds, him I shall beset on all sides. Those devotees who are attached to me, heart and soul, will naturally feel happy when they hear these stories. Believe me, if anybody sings my leelas, I will give him infinite joy and everlasting contentment. It is my special characteristic to free any person who surrenders completely to me, worship me faithfully, remembers me, and meditates on me constantly. How can they who worship me, who think of my stories and my life, and who always thus remember me, be conscious of worldly objects and sensations? I shall save my devotees from the jaws of death. If my stories are listened to, all diseases will be gotten rid of. So hear my stories with respect and think about them. Meditate on them and assimilate them. This is the way to happiness and contentment. The pride and egoism of my devotees will vanish. The minds of the listeners will be set at ease, and if you have wholehearted and complete faith, you will be the one with the supreme consciousness. The simple remembrance of the name Sai will do away with the sins of speech and hearing. Different works assigned to devotees. The Lord entrusts different tasks to different devotees. Some are given the work of building temples and the flights of steps on the banks of rivers, while others are made to sing the glories of God. Some are sent on pilgrimages, and I was allotted the work of writing the Satcharitra. Being a jack of all trades and a master of none, I was quite unqualified for this job. Then why should I undertake such a difficult task?
Who can describe the true life of Sai Baba? Sai Baba's grace alone can enable one to accomplish this difficult work. So when I picked up my pen, Sai Baba took away my egoism and wrote these stories himself. The credit of relating these stories, therefore, goes to him and not to me. Though Brahmin by birth, I lack the two eyes, the spiritual vision of Shruti, that which is revealed, and Smriti, that which is ordinarily remembered, and therefore was not capable of writing the Satcharitra. But the grace of the Lord makes a dumb man talk and enables a lame man to climb a mountain. For he alone knows how to get things done according to his wishes. Neither the flute nor the harmonium know how the sounds are produced. It is the musician who controls the sounds they produce. Similarly, we are mere instruments of God's divine will. Baba's stories as a beacon light. Lighthouses are constructed at various places near the sea to enable sailors to avoid rocks and dangers and to help them sail safely. Sai Baba's stories serve as a similar purpose in the ocean of worldly existence. They surpass nectar in sweetness and make our worldly path smooth and easy to traverse. Blessed are the stories of the saints, for when they enter our hearts, egoism and the sense of duality vanish, and when they are stored in the heart, doubts fly away. Pride vanishes, and the wisdom will be stored in abundance. The description of Baba's fame and hearing the same with love will destroy the sins of the devotee. Therefore, this is the simplest sadhana to attain salvation. The sadhana for the Krita age was tranquility of mind and body. For the Treta age, sacrifice. For the Dwapara, worship. And for the Kali age, the present, it is the singing the glory of the Lord. This last sadhana is open to all people. The other sadhanas, yoga, yajna, sacrifice, dhyana, meditation, and dharana, concentration, are very difficult to practice. But singing and hearing about the glory of the Lord, Sai Baba, is very easy. We only have to turn our attention towards him. Singing and listening to these stories will remove our attachment to the senses and their objects and will make devotees dispassionate and will ultimately lead them to self-realization. With this end in view, Sai Baba made me write his stories, the Sai Chaitramrita. The devotees may now easily read and hear these stories of Sai Baba, and while doing so meditate on his form. Thereby they attain devotion to their Guru and God, Sai Baba, and also attain detachment and self-realization. In the preparation and writing of this work, it is Sai Baba's grace which accomplished everything, using me as a mere instrument. Sai Baba's motherly love. Everybody knows how much a cow loves her infant calf. Her udder is always full, and when the calf wants milk and approaches the udder, out comes the milk in an incessant flow. Similarly, a human mother knows the needs of her child and feeds it on time. When it comes to dressing the child, the mother takes particular care to see that this is well done. The child knows nothing about this, but the mother's joy knows no bounds when she sees her child beautifully dressed. The love of a mother is peculiar, extraordinary, disinterested, and has no parallel. Sadgurus feel this motherly love towards their disciples, and Sai Baba had the same love towards me. Here is an instance of this. In 1916, I retired from government service. The pension that was settled in my case was not sufficient to maintain my family decently. On the Guru Purnima day of that year, I went to Shirdi with a few other devotees. There, Anna Chinchanikar, of his own accord, prayed to Baba for me as follows. Please look kindly upon him. The pension he gets is quite insufficient and his family is growing. Give him some other appointment, remove his anxiety and make him happy. Baba replied, he will get some other job, but now he should serve me and be happy. His dishes will always be full and never empty. He should turn all his attention towards me and avoid the company of atheists, irreligious and wicked people. He should be meek and humble towards everyone and worship me heart and soul. If he does this, he will get eternal happiness. Rohila's story.
Rohila's story illustrates Sai Baba's all embracing love. A man named Rohila, tall, well built, and as strong as a bull, came to Shirdi wearing a long kafni robe and was enamored by Baba. All day he would recite in a loud and harsh tone the Kalma, verses from the Holy Quran, and shout out loud, Allahu Akbar, God is great. The residents of Shirdi, who worked in the fields during the day, were welcomed with the Rohila's harsh cries and shouts when they returned home. Their sleep was severely disturbed, and they felt very inconvenienced. They suffered in silence for a few days, and when they could stand it no longer, they approached Baba and requested him to speak to the Rohila and stop the nuisance. Baba did not attend to their complaint. On the contrary, Baba took the villagers to task and asked them to mind their own business. He said to them that the Rohila had a very bad wife, a Zantippi, who tried to come in and trouble the Rohila. But hearing the Rohila's prayers, she did not dare to trouble him. In fact, the Rohila had no wife, and by his wife, Baba meant bad thoughts. As Baba liked prayers and cries to God better than anything else, he took the side of the Rohila and asked the villagers to wait and suffer the nuisance, which would abate in due course. Baba's sweet and nectar-like words. One day at noon, after Aarti, devotees were returning to their homes when Baba gave the following beautiful advice. Be wherever you like, do whatever you choose, but remember this well, that all you do is known to me. I am the inner ruler of everyone, and I am seated in their hearts. I envelop all creatures in the movable and the immovable world. I am the controller, the master wire puller of the show of this universe. I am the mother, the origin of all beings, the harmony of three gunas, the propeller of all senses, the creator, preserver, and the destroyer. Nothing will harm him who turns his attention towards me, but Maya will lash or whip him who forgets me. All beings, the visible, movable, and the immovable world are my body or form. Hearing these beautiful and precious words, I at once decided in my mind to serve no man henceforth but my Guru. But Baba's reply to Anna Chinchanikar's query, which was really my query, worried me greatly. As future events showed, Baba's words came true and I got a government job, but that was for a short duration. Then I became free and solely devoted myself to the service of my Guru, Sai Baba. Before concluding this chapter, I request the readers to overcome various hindrances, indolence, sleep, wandering of the mind, attachments to the senses, and turn their whole and undivided attention to these stories of Sai Baba. Let their love be natural. Let them know the secret of devotion. Let them not exhaust themselves through other sadhanas, and let them stick to the simple remedy, listening to Sai Baba's stories. This will destroy their ignorance and secure them salvation. So let Sai Baba be enthroned in everyone's hearts. In the next chapter, I shall speak of Sai Baba's arrival in Shirdi. Bow to Shirdi Sai, peace be to all. Sai Satcharitra, Chapter 4. Mission of the Saints, Shirdi, a holy place of pilgrimage, Sai Baba's personality, Gauli Buva's dictum, the appearance of Vitthal, Ksheerasagar's story, Das Ganu's bath in Prayag, the immaculate conception of Sai Baba and his first advent in Shirdi, the three Vadas. In the last chapter, I described the circumstances which led me to write the Sai Satcharitra. Let me now describe the first advent of Sai Baba in Shirdi with Baba's grace. Mission of the Saints. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, whenever there is a decay of dharma, righteousness, and an ascendancy of unrighteousness, I manifest myself for the protection of the virtuous, the destruction of the vicious, and for the establishment of righteousness. I thus manifest myself age after age. This is the mission of God and saints. Saints are his representatives and appear at appropriate times and help in their own way to fulfill that mission. For instance,
when spiritual preceptors are humiliated, when nobody cares for religious instructions, when everybody thinks himself very learned, and when people begin to partake of forbidden food and intoxicating drinks, when under the cloak of religion people indulge in malpractices, when people belonging to different sects fight amongst themselves, the orthodox forget their religious practices, when yogis neglect their meditation, when people begin to think that wealth, progeny, and wife are their sole concern and thus turn away from the true path of salvation, then saints appear and try to set matters right by their words and actions. They serve as beacon lights and show us that the right path for us to follow. In this way, many saints, Nivritti, Jnandev, Muktabai, Namdev, Gora, Gonai, Eknath, Tukaram, Narhari, Narsivai, Sajan Kasai, Savata, Ramdas, and various others appeared at various times to show people the right path. And Sai Baba also arrived on earth with the same mission. Shirdi, a holy place of pilgrimage. The banks of the Godavari river in the Ahmednagar district are very fortunate, for they give birth and refuge to many a saint, the most prominent among them being Jnaneshwar. Shirdi also falls in the Ahmednagar district. It is after crossing the Godavari river at Kopargaon that one reaches Shirdi. When you travel another 9 miles, you come to Nimgaon, from where Shirdi is visible. Shirdi is as famous as other holy places like Gangapur, Narsimhwadi, and Audambar on the banks of the Krishna river, just as the devotee Damaji flourished in a blessed Mangalaveda near Purandar, as Samarth Ramdas blessed Sajjangad, and just as Sri Narsimha Saraswati elevated Saraswati Wadi, Sainath flourished at Shirdi and blessed it. Sai Baba's personality. It's on account of Sai Baba that Shirdi grew into importance. Let us see what sort of personage Sai Baba was. He had conquered this samsara, worldly existence, which is very difficult to cross. Peace or mental calm was his ornament, and he was the repository of wisdom. He was the home of Vaishnava devotees and was very liberal, like Karna. He had no love for perishable things and was always engrossed in self-realization, which was his sole concern. He felt no pleasure in the things of this world or the world beyond. His heart was as clear as a clean mirror, and his speech always rained nectar. The rich or poor were the same to him. He did not know or care about honor or dishonor. He was the Lord of all beings. He spoke freely, interacted with everyone, saw the acting and dances of Nauch girls, and listened to ghazal songs. Yet, he did not swerve an inch from samadhi, mental equilibrium. The name of Allah was always on his lips, and while the world awoke, he slept, and while the world slept, he was vigilant. His inside was as calm as the deep sea. His ashram could not be determined, and nor could his actions be determined with certainty. And though he lived in one place, he knew all the transactions that took place in the world. His darbar, royal court, was imposing. He told hundreds of stories daily, and yet he did not break his vow of silence. He always leaned against the wall in the masjid and walked in the morning, noon, and evening towards the Lendi and Chavadi. He abided in the self at all times. Though an enlightened soul, he acted like a normal human being. He was meek, humble, and pleased everyone. Such was Sai Baba, and as the soil of Shirdi was trodden by Sai Baba's feet, it attained extraordinary importance. Just as Jnaneshwar had elevated Alandi and Eknath elevated Paithan, Sai Baba elevated Shirdi. Blessed are the grass and stones of Shirdi, for they could easily kiss the holy feet of Sai Baba and receive the dust from his feet on their heads. Shirdi became, for us devotees, another Pandharpur. Jagannath, Dwarka, Banaras, Kashi, Rameshwar, Badrikeshwar, Nasik, Trambakeshwar, Ujjain, and Mahabaleshwar, Gokarna. Contact with Sai Baba and Shirdi was like our Veda and Tantra, as it calmed our consciousness of the world and rendered self-realization easy. The darshana of Sri Sai was our yoga sadhana, and speaking to him destroyed our sins.
Shampooing his legs was our bath in the Triveni Prayag, and drinking the holy water from his feet destroyed our desires. To us, his commands were Vedas, and accepting his udi, sacred ashes, and prasad was purifying. He was our Sri Krishna and our Sri Rama, who gave us solace, and he was our Parabrahma, absolute reality. He was beyond the repair of the Dwandas, opposite, never dejected or related. He was always engrossed in his self as existence, knowledge, and bliss. Shirdi was his center, but his field of action extended far and wide to Punjab, Calcutta, North India, Gujarat, Dhaka, now in Bangladesh, and Konkan. Thus, Sai Baba's fame spread far and wide, and people from all parts of the world came to receive his darshana. Through mere darshan, people's minds, whether pure or impure, would become at once quiet. They got here the same sort of unparalleled joy that devotees get at Pandharpur upon seeing Vitthal Rakhumai. This is not an exaggeration. Consider what a devotee said in this regard. Gauli Buva's dictum. An old devotee named Gauli Buva, who was about 95 years old at the time, was a devotee of Pandharpur Maharaj. He spent 8 months every year at Pandharpur and 4 months, July to November, on the banks of the Ganges. He had a mule to carry his luggage and a disciple as his companion. Every year he made his pilgrimage to Pandharpur and came to Shirdi to see Sai Baba, whom he loved greatly. He used to stare at Baba and say, "This is Pandarinath Vitthal incarnate, the merciful Lord of the poor and helpless." Gauli Buva was a devotee of Vithoba and had made many trips to Pandharpur and testified that Sai Baba was indeed Pandarinath incarnate. Vitthal himself appears. Sai Baba was very fond of remembering and singing God's name. He always said the words, "Allah Malik," God is the sole master, and in his presence made others sing God's name continuously, day and night for 7 days. This is called Nama Saptaha. Once, he asked Kaka Sahib Dikshit to perform the Nama Saptaha. Kaka Sahib replied that he would do it, provided he was assured that Vitthal would appear at the end of the 7th day. Baba, placing his hands on Kaka Sahib's chest, assured him that Vitthal would certainly appear, but that the devotee must be earnest and devout. He then said, "This Dankapuri, Thakur of Thakurnath, the Pandhari of Vitthal, the Dwarka of Ranchod, Krishna, is here, Shirdi. One need not go far to see Dwarka. Will Vitthal come here from some other place? He is here. Only when the devotee is bursting with love and devotion will Vitthal manifest himself here, Shirdi." After the Saptaha was over, Vitthal manifested himself in the following manner. Kaka Sahib Dikshit was meditating after his bath and saw Vitthal in a vision. When he went at noon to receive Baba's darshan, Baba asked him, "Did Vitthal Patil come? Did you see him? He is a very truant fellow. Catch him firmly, otherwise he will escape." This happened in the morning, and at noon there was another Vitthal darshan. A hawker came there to sell pictures of Vithoba. The picture matched exactly the figure that appeared in Kaka Sahib's dream. On seeing this and remembering the Baba's words, Kaka Sahib Dikshit was quite surprised and delighted. He brought a picture of Vithoba and placed it in his shrine for worship. Bhagwantrao Ksirsagar's story. Baba's fondness of Vitthal is illustrated in Bhagwantrao Ksirsagar's story. Bhagwantrao's father was a devotee of Vithoba and used to go on annual trips to Pandharpur. He also worshipped an image of Vithoba at home. After his death, the son stopped everything: the trips, the worship, and the Shraddha ceremony. When Bhagwantrao came to Shirdi, Baba, who remembered his father, at once said, "His father was my friend, so I dragged him, the son, here. He never offered Naivedya, an offering of food, and so he starved Vitthal and me. So I brought him here. I shall change him now and set him to worship." Das Ganu's bath in Prayag. Hindus believe that a bath in the holy waters of Prayag, where the Ganga and Yamuna meet, is very meritorious, and thousands of pilgrims go there to have a sacred bath.
Das Ganu once wanted to go to Prayag for a bath and came to Baba to get his permission to leave. Baba replied, "It isn't necessary to go so far. Our Prayag is here. Trust me." Then, when Das Ganu placed his head on Baba's feet, out flowed streams of Ganga and Yamuna water, a stream from each of Baba's feet. Thus, seeing this miracle, Das Ganu was overwhelmed with feelings of love and adoration, and his eyes were full of tears. He felt inspired, and his speech burst forth into a song of praise for Baba and his Leelas. The Immaculate Conception of Sai Baba and his first advent in Shirdi. Nobody knew the parents, date of birth, or place of birth of Sai Baba. Many inquiries were made and many questions were put to Baba and others regarding these matters, but no satisfactory answers have been obtained. We know nothing about these matters. Namdev and Kabir were not born like ordinary mortals. They were found as infants. Namdev was found on the banks of the Bhimrathi river by Gonai and Kabir on the banks of the Bhagirathi river by Tamal. Sai Baba's story was similar. He first manifested himself as a 16-year-old boy under a neem tree in Shirdi for the sake of his devotees. Even back then, he seemed to be full of knowledge of the Brahman. He had no desire for worldly objects even in his dreams. He had kicked out Maya and Mukti deliverance, was serving at his feet. An old woman in Shirdi described him thus: a young lad, fair, smart, and very handsome. He was first seen under the neem tree, seated in an asana. The people of the village were wonderstruck to see such a young boy practicing hard penance with no regard for the heat or cold. By day, he associated with none, and by night, he wasn't afraid of anybody. People wondered where this young chap had turned up from. His form and features were so beautiful that a mere look endeared him to everyone. He didn't go to anybody's door and always sat under the neem tree. Outwardly, he looked very young, but through his actions, he was really a great soul. He was the embodiment of dispassion and was an enigma to everyone. One day, it so happened that God Khandoba possessed the body of a devotee, and people asked him, "Deva, God, please tell us whose son this boy is and where he came from." God Khandoba asked them to bring a spade and dig in a particular place. When it was dug, bricks were found underneath a flat stone. When the stone was removed, a corridor led to a cellar where cow-mouth-shaped structures, wooden boards, and necklaces were seen. God Khandoba said, "This lad practiced penance here for 12 years. Then people began to question the lad about this. He put them off the scent by telling them that it was his guru's holy resting place and requested them to guard it well. The people then closed the corridor just as they found it. As Ashwatha and Audambar trees are held sacred, Baba regarded this neem tree equally sacred and loved it the most. Masalpati and other Shirdi devotees regarded this site as a final resting place of Baba's Guru and prostrated before it. The three Vadas, the land with the neem tree and the land that surrounded it, was bought by Hari Vinayak Sathe, and on this site the big building was named Sathe's Vada was built. This Vada was initially the sole resting place for pilgrims. A raised platform was built around the neem tree and lofts within the steps were constructed. Under the steps there is a niche facing south and devotees sitting on the platform facing north. It is believed that if a devotee burns incense there on Thursday and Friday evenings, by God's grace they will always be happy. This Vada was old and dilapidated and needed repairs. The necessary repairs and additions and alterations have now been made by the Sai Samsthan. Then, after a few years, another Vada, Dikshit Vada, was constructed. Kaka Sahib Dikshit, a solicitor from Bombay, had gone to England. He had injured his leg in an accident. The injury could not be gotten rid by any means. Nana Sahib Chandorkar advised him to try Sai Baba. So he saw Sai Baba in 1909 and requested him to cure the lameness of his mind rather than that of his leg. He was so pleased with the darshana of Sai Baba that he decided to reside in Shirdi. So
He built a vada for himself and other devotees. The foundation of this building was laid on the 10th of December 1910. On this day, two other important events took place. Mr. Dada Saheb Khaparde was given permission to return home, and the nighttime aarti in the Chavdi commenced. The Vada was completed and was inhabited on the Ramnavami day in 1911 with due rites and formalities. Another Vada, palatial mansion, was constructed by the famous millionaire from Nagpur, Mr. Booty. Lots of money was spent on this building, but the amount was well utilized as Sai Baba's body rests in this Vada, which is now called the Samadhi Mandir. The site of this mandir formerly had a garden, which was watered and looked after by Baba. 3 Vadas thus sprang up where there was none formerly. Of these, Sathe's Vada was the most useful to everyone in the early days. The story of the garden, attended to by Sai Baba with the help of Vaman Tatya and Sai Baba's temporary absence from Shirdi, his return to Shirdi with the marriage party of Chand Patil, the company of Devi Das, Janki Das and Gangagir, Baba's wrestling match with Moddin Tamboli, his life in the masjid, his love for Dengale and other devotees, and a few other incidents will be described in the next chapter. Bow to Sri Sai, peace be to all. Sri Sadguru Sai Nath Maharaj ki jai. श्री साईनाथाय नमो नमः. अथ श्री साई चरित्र अध्याय 5. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री कुलदेवताय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः. श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः. आता पूर्वील कथानुसंधान बाबा शिर्डीत गुप्त होऊन चांद पाटलाचे पुनरागम झाले ते कथन परिसावे. स्वयं बाबांनी वाहुनी जीवन केली कैसी बाग निर्माण, गंगागीरादी संत संमेलन कथा विंदान पावनते. पुढे काही कालपर्यंत बाबा होते जे जाहले गुप्त. मुसलमानाचे वराडात आढळले शिर्डीत हे रत्न. तया आधीच देवीदास करुणी होते शिर्डीत वास. पुढे आले जानकीदास गोसावी शिर्डीस राहावया. तो कैसा घडला प्रकार कथितो आता सविस्तर. होनिया अवधान पर श्रोता सादर परिसिजे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील धूपखेडे गावामधील मुसलमान भाग्यशील चांद पाटील नाव जया सफर करिता औरंगाबादेची घोडी एक हरवली त्याची. 2 महिने दादन तिची आता कशाची आढळते. पाटील पूर्ण निराश झाले. घोडी लागे बहु हळहळले. खोगीर पाठीवरी मारिले. माघारा फिरले मार्गाने. औरंगाबाद मागे टाकिले. 4.5 कोस आले. मार्गात आंब्याचे झाड लागले. तळी दिसले हे रत्न. डोईस टोपी अंगात कफनी. काखेस सटका तमाखू चुरुनी. तयारी केली चिलीम भरुनी. नवल ते स्थानी वर्तले. चांद पाटील रस्त्याने जाता फकीर ऐकला हाका मारिता. ए रे चिलीम पिऊनी जा पुढता. छाये खालता बैस जरा. फकीर पुसे हे खोगीर कसले. पाटील म्हणे जी घोडी हरवले. मग तो म्हणे जा शोधते नाले. घोडे सापळले तत्काळ. चांद पाटील विस्मित झाला. मनी म्हणे अवलिया भेटला. पार नाही या कृत्याला. मानव याला म्हणू नये. पुढे तो घोडी घेऊनी परतला. पाटील पूर्वस्थळी पातला. फकीर पासी बैसवी त्याला. चिमटा उचलिला स्वहस्ते. मग तो तेथेची मातीत खुपसिला. आतुनी प्रदीप्त निखारा काढिला. हातातील चिलमीवर ठेविला. सटका घेतला उचलुनी. पुढे छापी भिजवावयास पाणी नाही जवळपास. सटका आपटी जमिनीस पाणी निघावयास लागले. छापी भिजवुनिया पिळिली. मग ती चिलमीस भोवती वेष्टिली. स्वये प्याला तयाही पाजिला. मती गुंगली पाटलाची. पडला फकीरास आग्रह. पवित्र करा हो माझे गृह. पाटीलावरी केला अनुग्रह. लीला विग्रह धारके या. दुसरे दिवशी गावात गेले. पाटीलाचे
देवाच्या तेथे उतरले. काही काळ तेथेची राहिले. पुढे ते परतले शिर्डीस. हा चांदपाटील कारभारी धूपखेड्याचा ग्रामाधिकारी स्वस्त्रीच्या भाच्या लागी नोवरी जुळली सोयरीक शिर्डीत. चांदभाईच्या कुटुंबाचा लग्नायोग जाहला भाचा. सुयोग शरीर संबंधाचा घडला शिर्डीच्या वधूचा. घेऊनी सवे गाड्या घोडी वराड निघाले यावया शिर्डी. मग त्या चांदभाईचे ओढी बाबाही वराडी प्रविष्ट. लग्न झाले वराड परतले. बाबा एकटेची मागे राहिले. राहिले ते राहुनी गेले. भाग्य उदेले शिर्डीचे. साई अविनाश पुरातन. नाही हिंदू ना यवन. जातपात कुळ गोतहीन. स्वरूप जान निजबोध. साई साई म्हणती जे जन. ते तरी काय नामाभिधान. या साई म्हणूनी बहुमान. पुरसर संबोधन जेते हे. खंडोबाचे देवळापाशी म्हाळासा पतीचिया खळीयासी. आरंभी बाबा वराढानिशी उतरल्या दिवशी हे पडले. आरंभी ते भगताचे खळे. पुढे ते अमीनभाईचे झाले. वराड लग्नाचे जे आले. येथेची उतरले वडातळी. गाड्या सर्व सुटल्या खळ्यात. खंडोबाचे पटांगणात. बाबाही तेथे वराडा समेत सर्वा समवेत उतरले. हे बाल फकीर गाडीतून उतरले. प्रथम भगताचे दृष्टीस जे पडले. या साई म्हणून सामोर गेले. नाम ते पडले तेथुनी. पुढे मग तेव्हापासून साई साई ऐसे म्हणून मारू लागले हाकही जन. नामाभिधान ते झाले. मग ते तेथे चिलीम प्याले. मशिदीत वास्तव्य केले. देवीदास सहवासी रमले. आनंदले शिर्डीत. कधी बैठक चावडीत. कधी देवीदासाचे संगतीत. कधी मारुतीचे देवालयात स्वच्छंद रत राहावे. हे देवीदास शिर्डी गावी होते आधीच बाबाचे पूर्वी. पुढे आले जानकीदास गोसावी महानुभावी शिर्डीत. तया जानकीदासासवे महाराजांनी बोलत बसावे. किंवा महाराज तेथे असावे. तेथे बसावे जानकीदासे. उभयतासी मोठे प्रेम. बैठकी होती नित्य नेम. ऐसा तयाचा समागम सुख परम सकळिका. तैसेची एक गंगागीर महाप्रसिद्ध वैष्णव वीर. ब्रह्मचर्याश्रमी पूर्ण तांबेकर. शिर्डीस वरचेवर आगमन. आरंभी साई विहिरीवरी. उभय हस्ती मातीच्या घागरी. पाणी वाही हे देखोनी अंतरी. आश्चर्य करीत गंगागीर. ऐसी ही साईची दृष्टादृष्ट. होताची बुवा वदले ते स्पष्ट. धन्य शिर्डीचे भाग्य वरिष्ठ. जोडले श्रेष्ठ हे रत्न. हा आज खांदा पाणी वाही. परी ही मूर्ती सामान्य नाही. होते या भूमीचे पुण्य काही. तरीच ये ठाई पातली. तैसेची एक आणिक संत आनंदनाथ नामे विख्यात. तयाचेही हेची भाकीत. कर्तृत्व अद्भुत करविले हे. महाप्रसिद्ध आनंदनाथ येवले ग्रामी मठ स्थापित. काही शिर्डीकरा समवेत. आले ते शिर्डीत एकदा. अक्कलकोटकर महापुरुष आनंदनाथ तयाचे शिष्य म्हणाले पाहुणी साईस समक्ष. हिरा हो प्रत्यक्ष हा हिरा. आज जरी हा उकिरड्यावर तरी हा हिरा नाही गार. आनंदनाथाचे हे उद्गार बाबांचे पोरवय होते तो. ध्यानात ठेवा हे माझे बोल. पुढे तुम्हासी आठव येईल. भविष्य कथुनी हे पुढील. मग ते येवल्यासी परतले. केश माथ्याचे संबंध राखीत. डोके न कधी मुंडवीत. पहिलवानासम पहेराव करीत. तरुण वयात हे साई रहात्याची. बाबा जेव्हा जात झेंडू जाई जुई आणीत. निज हस्ते उखरी खुपसीत. पाणीही घालीत नेमाने. वामन तात्या तयांचे भक्त. मृतिकेचे घडे तत्पित्यर्थ कच्चे दोन प्रत्यही पुरवीत. बाबा शिंपीत निज हस्ते. आडावरील कुंडीतुनी पाणी आणीत खांदा वाहुनी. घडे मग होता अस्तमान. ठेवीती नेऊन निंबातळी. ठेवण्याचाच अवकाश तेथ. जागचे जागीच भंगुनी जात. उदेईक तात्या आणूनी देत. घडे तया प्रत नूतन. घडा भाजला टिकाऊ बरा. परी त्या लागे कच्चा कोरा. आव्याचे श्रमाविन कुंभारा. आधीच विकरा घड्याचा. 3
वर्षे हाची उद्योग उघड्या जागी उठविला बाग तेची स्थानी आज हा सुयोग वाड्याचा उपभोग जन घेती येथेची निंबातळी साधका भाई नामे भक्ते एका अक्कलकोटच्या स्वामीच्या पादुका पूजा कामुका स्थापिल्या अक्कलकोटाचे स्वामी समर्थ होते साईचे उपास्य दैवत छबी पूजन नित्य नियमित साई करीत निष्ठेने वाटले अक्कलकोटी जावे पादुकाचे दर्शन घ्यावे पूजा उपचार समर्पावे मनोभावे पादुकासी मुंबईहून निघावयासी केली सर्व तयारीसाची उद्या निघणार तो निश्चय तैसाची राहुणी शिर्डीस वाट धरिली उद्या जाणार तो आज स्वप्न स्वामी समर्थ आज्ञापन शिर्डीस साप्रत मम स्थान तेथे तू प्रस्थान करी गा ऐशी ती आज्ञा शिरी वंदून भाई निघाले मुंबईहून शिर्डीस एक षण्मास राहून आनंद संपन्न झाले भाई पूर्ण निष्ठावंत स्मरणी राहावा तो दृष्टांत म्हणून निंबातळी तेथ पादुका स्थापित स्वामीच्या शके 1834 साली श्रावण शुद्ध पर्वकाळी पादुका स्थापिल्या निंबातळी भजनमेळी सप्रेमे दादा केळकरांच्या हस्ते पादुका प्रस्थापन करविले मुहूर्ते शास्त्र विधी विधानाते केले निज हस्ते उपासनीनी पुढील व्यवस्थेची निरवण पूजा करी दीक्षित ब्राह्मण व्यवस्था पाही भक्त सगुण ऐसे हे आख्यान पादुकांचे ऐसेची हे संत निर्विकार प्रत्यक्ष ईश्वरी अवतार करावया जगदद्गार उपकारार्थ अवतरती पुढे काही दिवस जाता घडली आश्चर्यकारक वार्ता श्रोती सादर श्रवण करिता नवल चित्ता वाटेल तांबोळी एक मोही दीन भावी तया सवे तेढ पडूनी काही गेली झोंबी जुंपेनी पाही लागली लढाई परस्पर पहिलवान दोघे कुशल होणार पुढे न चले बल मोही दीन होऊनी प्रबळ बाबा हतबळ जित झाले तेथून मग निश्चय केला पोशाख अवघा बाबांनी बदलला कफनी ओढिली लंगोट लाविला फडका गुंडाळीला माथ्यासी केले गोनाचे वरासन गोनाचेची अंथरुण फाटके तुटके करोणी परिधान त्यातची समाधान मानावे गरीबी अवल बादशाही अमीरी से लाख सवाई गरीबों का अल्लाह भाई अक्षयी साई वदत की गंगा गिरही एची स्थिती तालीमबाजीची अतिप्रीती एकदा खेळत असता कुस्ती जाहली उपरती तयाते प्राप्त काळ घटका आली एका सिद्धाची वाणी बदली देवा सवेची करीत केली तनु ही झिजवली पाहिजे कुस्ती खेळता खेळता कानी पडली अनुग्रह रूप ही वाणी ऐहिकावर ओतुनी पाणी परमार्थ भजनी लागले पुन तांब्याची या निकटी नदीच्या उभय प्रवाहापोटी आहे बाबांचा मठ त्या बेटी सेवेसाठी शिष्यही असो पुढे साईनाथ विचारल्याचेची उत्तर देत स्वये आपण कोणा समवेत कधीही बोलत नसत ते दिवसा बैठक निंबाखाली कधी शिवेच्या ओढ्याजवळी बाभळीची आडवी डहाळी बैसावे सावलियेत येच्या कधी तेथून एक मैलावरी निमगाव गावाचिया शेजारी बाबा दिवसा दुपारी तिपारी स्वेच्छाचारी हिंडत प्रसिद्ध त्रिंबक ढेंगळ्या घरी निमगाव गावाची जहागीरदारी तेथील बाबा साहेब डेंगळ्यावरी प्रीती भारी बाबांची निमगावावरी जाता फेरी बाबांनी जावे तयाचे घरी अति प्रेमे तया बरोबरी दिवस भरी बोलावे बंधू तयासी होते लहान नाना साहेब नामाभिधान तयासी नव्हते पुत्र संतान तेथे ते खिन्न मानसी प्रथम कुटुंबासी योग मंद म्हणून केला द्वितीय संबंध तरीही सुकेना ऋणानुबंध दैव निर्बंध अगाध पुढे बाबासाहेब त्यास पाठवित साई दर्शनास पावते जाहले आशीर्वादास पुत्र प्रसादासही नाना पुढे साईचे दर्शनाला जनसमुदाय लोटू लागला महिमा साईचा वाढत गेला वार्ता नगराला पोहोचली तेथे सरकार दरबारी चलन नानाचे होते मोठे वळण तेसेसी चिदंबर केशव म्हणून तेही चिटणीस जाण जिल्ह्याला साई समर्थ दर्शनपात्र घेऊनी आपुले इष्टमित्र दर्शनार्थ यावे पुत्र कलत्र धाडिले पत्र तयासी ऐसे एका मागून एक शिर्डीस येऊ लागले अनेक वाढला जैसा बाबांचा लौकिक
परिवारही देख तैसाची न लगे जरी कोणाचा सांगत तरी दिवसा भक्त परिवाराक्रांत अस्तमानानंतर शिरडीत पडक्या मशिदीत निजावे चिलीम तमाखू टमरेल अंगात कफनी पाय घोळ माथ्यासी फडका धवल सटकास जवळ सर्वदा ते धूत वस्त्र एक धवल वामकर्णा मागे सुढाळ जटा जूट सम देऊनी पिळ गुंडाळी तो शिरासी या वसनाचे आच्छादन आठाठ दिन स्थानविहीन पायी जोडा ना वाहन एक आसन गोनाचे पोत्याचा तुकडा एक तयावरी नित्य बैठक तक्क्यात कसा तो नाही ठाऊक आरानुक कैसेनी तोवरी ते जीर्ण तरट तीच त्यांची आवडती बैठक सदा सर्वदा तैशीच निष्टंक अष्टोप्रहर ते जागी तेची आसन वा आस्तरण कासे एक कोपीन परिधान नाही दुजे वस्त्र प्रावरण शीत निवारण एक धुनी दक्षिणाभिमुख आसनस्त कठड्यावरी वामहस्त समोर धुनीकडे अवलोकित बाबा मशिदीत बैसत अहंकार वासना समवेती नानाविध वृत्तीच्या आहुती प्रपंच प्रवृत्ती समग्र हविती युक्ती प्रयुक्ती धुनीत ऐसिया त्या प्रखर कुंडा लाविला ज्ञानाभिमानाचा ओंडा अल्ला मालिक सदैव तोंडा तयाचा झेंडा अखंड मशीद तरीती केवती अवघी जागा दोन खनती त्यातची बसती उठती निजती भेट देती समजता गादी तक्क्या हे तो आता भक्त समुदाय मिळाला भवंता आरंभी तयांच्या निकट जाता सकळास निर्भयता नवतीच सन 1912 तेथुनी नवा प्रकार सारा मशिदीची या स्थित्यंतरा आरंभ खरा तेथुनी ढोपर जमिनीसी खड्डे होत मशिदीसी एके निशित झाली फरशी भावासरशी भक्ताच्या मशिदीचिया वसती आधी बाबा राहात तकियामधी तेथेची कित्येक कालावधी अबाधित रमले तेथेची चरणी बांधोनी घुंगर खंजिरीचिया तालावर नाचावे बाबांनी अतिसुंदर गावेही मधुर प्रेमाने आरंभी साई समर्थास दीपोत्सवाची मोठी हौस तदर्थ स्वये दुकानदारास तेल मागावयास ते जात घेऊन या टमरेल हाती वाण्या तेलाच्या दुकानाप्रती स्वये तेलाची भिक्षा मागत आणूनी भरती पणत्या लावीत झगझगीत देऊळी आणि मशिदीत ऐसे काही दिवसापर्यंत सदोदित चालले दीपाराधनी बहुप्रीत दिवाळीचाही दीपोत्सव करीत चिंध्या काढूनी वाती वळीत दीप उजळीत मशिदी तेल तो रोज आणीत फुकट वानिया मने आले कपट सर्वा मिळवनिया केला कट पुरे कटकट ही आता पुढे नित्य नियमानुसार बाबा तेल मागू येता सर्वांनीही नाही म्हणता काय आश्चर्यता वर्तली बाबा निमुट गेले परत काकडे सुकेची ठेविले पण त्यात तेल नसता हे काय करीत वाणी पाहात मौजती मशिदीच्या ज्योत्यावरील बाबा उचलुनी घेती टमरेल त्यात होते इवलेस तेल कष्टे लागेल सांजवात त्या तेलात घातले पाणी स्वये बाबा गेले पिओनी ऐसे ते ब्रह्मार्पण करुणी निवळ पाणी घेतले मग ते पाणी पणत्यात ओतुनी सुके काकडे पूर्ण भिजवुनी तयासी काडे ओढुनी लावुनी दीप पेटवुनी दाविले पाहुनिया ते पाणी पेटे पाणी वाणी घालिती तोंडात बोटे बाबासी आपण वदलो खोटे केले ओखटे मनी म्हणती तेल नसता अनुमात्र पणत्या जळायला सर्व रात्र वाणी साईच्या कृपेसी अपात्र वधू सर्वत्र लागले बाबांचा हा काय प्रताप असत्य भाषणे झाले पाप दिधला बाबांसी व्यर्थ संताप हा पश्चाताप वानिया बाबांच्या ते नाही मनी राग द्वेषा नातळे जणी शत्रू मित्र तयाना कोणी सर्व ही प्राणी सारिखे असो आता पूर्वानुसंधान कुस्तीत यशस्वी मोहिद्दीन याहुनी पुढील चरित्र महिमान दत्तावसान परिसिजे कुस्ती नंतर 5वे वर्षी फकीर अहमदनगर निवासी जव्हार अल्ली नाम जयासी आला राहात्यासी सशिष्य त्याहुनी एक उघडी वखळ वीरभद्राचे देऊळाजवळ फकीराने दिधला तळ फकीर तो सबळ देवाचा जरी नसता तो दैवाचा तरी तया ते लाध दाकायचा
साई सारखा शिष्य मौजेचा, डंका जयाचा सर्वत्र. लोक गावात होते अनेक, त्यातही होते मराठे कैक. त्यातील भगू सदाफळ एक, जाहला सेवक तयाचा. फकीर होता मोठा पढीक, कुराण शरीफ करतला मलक. स्वामी परमार्थी आणि भाविक, लागले अनेक तच्चरणी. ईदगा बांधावया आरंभ केला, ऐसा काही काळ गेला. वीरभद्रदेव बाटविला, आरोप आला त्याजवरी. पुढे तो ईदगा बंद पडला, फकीर गावा बाहेर घालविला. तेथुनी मग तो शिर्डीस आला, मशिदीत राहिला बाबापाशी. फकीर होता मृदुभाषिणी, गाव लागला तयाचे भजनी. बाबासही काही केली करणी, घातली मोहिनी जन म्हणती. हो म्हणे तू माझा चेला, स्वभाव बाबांचा बहु रंगेला. म्हणता फकीर संतोषला, घेऊनी निघाला बाबासी. बाबा सारिखा शिष्य सधरू, जव्हार अल्ली जाहले गुरु. मग दोघाचा जाहला विचारू, रहिवास करू राहात्यात. गुरु नेने शिष्याची कळा, शिष्य जाणे गुरुच्या अवकाळा. परीन केव्हाही अनादर केला, स्वधर्म राखिला शिष्याचा. गुरु मुखातून बाहेर आले, योग्य नाही पाहिले. वचन वरचेवरी झेलिले, पाणीही वाहिले गुरु गृही. ऐसी चालली गुरु सेवा, शिर्डीसी यावे केव्हा केव्हा. ऐसे होऊ लागले जेव्हा, काय मग तेव्हा जाहले. ऐसे वरचेवरी होऊ लागले, राहत्याशी राहू लागले. फारची फकीरा नादी भरले, वाटले अंतरले शिर्डीला. जनासी वाटे जव्हार अलीला, साईसी निज योग बळे आकळी. साईची तो कळा वेगळी, अभिमान जाळी देहाचा. साईसी कोठूनी आला अभिमान, श्रोते सहज करीतील अनुमान. परी हे लोकसंग्रहार्थ आचरण, अवतरण कार्य हेच. शिर्डीस्थ बाबांचे प्रेमी भक्त, बाबांचे ठाई अति आसक्त. तया ते बाबापासूनी वियुक्त, राहणे आयुक्त वाटले. साई सर्वस्वी तया अधीन, पाहुनी ग्रामस्थ उद्विग्ध मन. कैसे करावे तया स्वाधीन, विचारी निमग्न जाहले. जैसे कनक आणि कांती, जैसा दीप आणि दीप्ती, तैसीच हे गुरु शिष्या स्थिती. ऐक्य प्रतीत उभयांसी. मग ते शिर्डीचे भक्त मंडळ गेले राहत्यास त्या ईदग्याजवळ. पाहू प्रयत्न वेचुनी प्रबळ, बाबासह सकळ मग परतू. बाबा तेई देती उलट बुद्धी, फकीर आहे महाक्रोधी. लागू नका तयाचे नादी, तो मज कधीच न विसंबे. तुम्ही येथून करा पलायन, आताच येईल गावातून. करीन तुमचे निसंतान, परम कठीण क्रोध त्याचा. राग तयाचा मोठा कडक, येताची होईल लाल भडक. जा निघून जा की तडक, धरा की सडक शिर्डीची. आता पुढे काय कर्तव्यता, बाबा तो कठीट उलटी कथा. इतुक्यात फकीरा आला अवचिता, जाहला पुसता तया ते. आलात काय पोरासाठी, काय करीतसा येथे गोष्टी. शिर्डीस माघारा न्यावे ये पोटी, परी या कष्टी पडू नका. ऐसे जरी तो प्रथम बदला, ग्रामस्थान पुढे तोही कचरला. म्हणे मलाही घेऊनी चला, सवे मुलाला नेऊ की. असो फकीरा आला सवे, तयासही न बाबास सोडवे. बाबासही न तया विसंबवे, न कळे संभवे हे कैसे. साई परब्रह्म पुतळा, जव्हार अली भ्रमाचा भोपळा. देवीदासे कसास लाविला, भोपळा फुटला शिर्डीत. देवीदासाचा बांधा सुंदर, डोळे सतेज रूप मनोहर. 10-11 वर्षाची उमर, प्रथम शिर्डीवर आला ते. ऐसा तो अल्पवयासी, एक लंगोट मात्र कासेसी. मारुतीचे देऊळासी, तीर्थवासी तो उतरला. आप्पा भिल्ल महाळसापती, तयाकडे जाती येती. काशी रामादिक शिदा देती, वाढली महती तयाची. वऱ्हाडा समवेत जे बाबा आले, तया आधीच 12 झाले. देवीदास येऊनी पाहिले, वसते जाहले शिर्डीत. आप्पा भिल्ला पाटीवर शिकवी, व्यंकटेश स्तोत्र पढवी. सर्वा करवी मुखद्वत म्हणवी, पाठ चालवी नेमाने. देवीदास महाज्ञानी, गुरुत्व घेतले तात्या बांनी. काशीनाथ दिक शिष्याग्रणी, तया चरणी लागले. तया पुढे तो फकीरा आणिला, शास्त्रीय वाद विवाद मांडिला. वैराग्याने फकीर जिंकिला, हाकुनी लाविला तेथून. मग तो जो तेथून निसटला, वैजापुरी जाऊनी राहिला. पुढे कित्येक वर्षांनी आला, नमस्कारिला साईनाथ. आपण गुरु साई केला, हा सर्व त्याचा भ्रम निरसला. बाबांनीही पूर्ववत सत्कारिला.
शुद्ध झाला पश्चातापे. ऐसी बाबांची अगाध लीला, निवाडा होण्याचा तेव्हा झाला. परी तो गुरु आपण चेला, भाव हा आदरिला तेथवर. तयाचे गुरुपण तयाला, आपुले चेलेपण आपणाला. हा तरी एक उपदेश येथिया, स्वये आचरिला साईनाथे. आपण होनाचे होऊनी रहावे, किंवा कोणास आपुले करावे. याहुनी अन्य असने न बरवे, तेने न उतरवे परपार. हाची एक ये वर्तनी धडा, परी दुर्लभ ऐसा निधडा. होईल जयाचे मनाचा धडा, निरभिमान गडा चढेल. येथे सद्बुद्धी परिकल्पित, चतुराई न कामा येत. जयामनी साधावे स्वहित, अभिमान रहित वर्तावे. जेने देहाचा अभिमान जाळीला, तेनीची हा देह सार्थकी लाविला. तो मग कोणाचाही होईल चेला, साधावयाला परमार्थ. पाहोनिया ती निर्विषय स्थिती, लहान थोर विस्मित चित्ती. वय लहान गोजिरी मूर्ती, चोज करीती जनसारे. ज्ञानी याचा देह व्यापार होतसे पूर्वकर्मानुसार. तयान प्रारब्ध कर्मभार, कर्म करतार हो नेने. जरी सूर्यास अंधारी रिघाव, तरीच ज्ञानिया द्वैतभाव. स्वस्वरूपीची जया अवघे विश्व, वसता ठाव अद्वैत. हे गुरु शिष्याचे आचरित, साईनाथाचे परमभक्त. माळसा पतीनी करविले श्रुत, तैसेची सादंत्य कथियेले. असो आता हे आख्यान, पुढील चरित्र याहुनी गहन. होईल ते कथाक्रम कथन, सावधान श्रवणी व्हा. मशीद पूर्वी होती कैसी, केसिया कष्टी जाहली फरसी. साई हिंदू या अवन वंशी, नेनवे भरवशी हे कवनाश. धोती पोती खंड योग, करीत भोगीत भक्ताचे भोग. हे सर्व निवेदन यथा सांग, होईल चांग पुढारा. हेमाड साईस शरण, चरण प्रसाद हे कथा निरूपण. श्रवणे होईल दूत नती दुरित निवारण. पुण्य पावन ही कथा, स्वस्ती श्री संत सज्जन प्रेरित. भक्त हेमाड पंथ विरचित, श्री साई समर्थ चरित्रे. श्री साई पुनः प्रकटी भवन, नाम पंचमोध्याय हा संपूर्ण. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभं भवतु. 6 ओम श्री साईनाथाय नमो नमः. अथ श्री साई चरित्र अध्याय 6. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री कुलदेवताय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः. श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः. असो परमार्थू वा संसारू, जेथे सद्गुरु कर्णधारू. तेची पारू पैल पारू, नेऊनी उतारू लाविल. सद्गुरु शब्दे वृत्ती उठता, साईस प्रथम आठवती चित्ता. उभेच ठाकती सन्मुखता, ठेविती माथा निज हस्ते. धुनी माजील उदिस संवित, पडे जव मस्तकी वरद हस्त. हृदय स्वानंदे उलुनी घेत, प्रेम ओसंडत नेत्रातुनी. नवल गुरुहस्त स्पर्शाविंदान, प्रलयाग्नितही न होई जो दहन. त्या सूक्ष्म देहाचे करी ज्वलन, भस्मी भवन कर स्पर्शे. चुकुनी देवाची कथा वार्ता, निघाल्या उठे तिडिक माथा. वाचा प्रवाहे बाष्कळता, तयाही स्थिरता लाधावी. शिरी ठेविता करकमल, अनेका जन्मीचे परिपक्वमल. जाती धुवोनी होती निर्मळ, भक्त प्रेमळ साईचे. रूप पाहता ते गोमटे, परमानंदे कंठ दाटे. नयनी आनंदा पाजर फुटे, हृदयी प्रकटे अष्टभाव. सोहभावस जागवित, निजा नंदास प्रकटवित. ठाईच मी तूपणा वीरवित, सामरस्ये अद्वैत मिरवी. वाचू जाता पोथी पुराण, पावलो पावली सद्गुरु स्मरण. साईच नटे रामकृष्ण, करवी श्रवण निज चरित्रे. परिसू बैसता भागवत, कृष्णची साई नखशिखात. वाटे गाई ते उद्भव गीत, भक्त निजहित साधाया. सहज बसावे करू वार्ता, तेथेही साईनाथाची कथा. अकल्पितची आठवे चित्ता, योग्य दृष्टांता द्यावया. कागद घेऊनी लिहू म्हणती, अक्षरी अक्षर येईन जुळविता. परी तोची जेव्हा लिहवी स्वसत्ता, लिहिता लिहिता लिहवेना. जव जव अहंभाव डोकावत,
निज करे तया बळी दडपीत वरी करोणी निज शक्तिपात शिष्याच कृतार्थ करीत ते काचा वाचा मने येता लोटांगणी साई समर्था धर्मार्थ काम मोक्ष हाता चढती न मागता आ पैसे कर्म ज्ञान योग भक्ती या चौमार्गी ईश्वर प्राप्ती जरी ही चार चौबाजू निघती तरीही पोचविती निज ठाया भक्ती ही बाभुळ वनीची वाट खाचा खळगे अति बिकट एक पावली परीती नीट हरी निकट नेईकी काटा टाळूनी टाका पाय हाची एक सुलभ उपाय तरीच निज धाम पावाल निर्भय निक्षुनी गुरुमाय वदेहे मनाचे मळे जे भक्ती शिंपिले वैराग्य खुले ज्ञान फुले कैवल्य फळे चित सुख उफळे अचूक चुकले जन्म मरण मूळ परमात्मा स्वयंसिद्ध तोची सच्चिदानंद त्रिविध उपाधी योगे झाला प्रबुद्ध प्रकटबोध भक्तार्थ तैसा तो या त्रैगुण्ये व्यक्त माया ही होऊनी क्रिया प्रयुक्त सत्व रज तमा चाळवित करी सुव्यक्त निज गुण मृत्तिकेचा विशिष्ट आकार तया नाम घट साचार घट फुटता नाम रूप विकार निगुणी पार जातात हे अखिल जग माये पासाव परस्परा कार्य कारण भाव मायाची प्रत्यक्ष सावयव होऊनी उद्भवली जगरूपे जगाआधी मायेची स्थिती जाहू पाहता नाही व्यक्ती परमात्मरूपी लीन होती परम अव्यक्ती संचली व्यक्त होताही परमात्म रूप अव्यक्त तरीही परमात्म रूप एवच ही माया परमात्म रूप अभेद रूप परमात्मी मायेने तमोगुणापासून केले जड पदार्थ निर्वाण निर्जीव चलन वलन शून्य क्रियापूर्ण ही प्रथम मग मायेच्या रजोगुणी परमात्म चिदगुणाची मिळणी होता उघडली चैतन्य खाणी स्वभावगुणी उभयताचे पुढे या मायेचा सत्वगुण करी बुद्धितत्व निर्माण तेथ परमात्म्याचा आनंद गुण मिसळता खेळा संपूर्णता एवं माया महाविकारी क्रियोपाधी जोन स्वीकारी पूर्वोक्त पदार्थार्थे न करी त्रिगुण तोवरी अव्यक्त गुणानुरूप क्रिया काही न करिता माया भक्त नाही राहू शके अव्यक्त पाही स्वये जे सेवी अक्रियत्व माया कार्य परमात्म्याचे जग हे कार्य त्या मायेचे सर्व खिलविंद ब्रह्म त्वाचे ऐक्य तिहीचे हे ते हेची ऐसी जे हे अभेद प्रतीती कैसेनी प्राप्त होय निश्चिती ऐसी उत्तेच्छा जया चित्ती वेदश्रुती पहावी सारासार विचारशक्ती वेदशास्त्र श्रुती स्मृती गुरु वेदांत वाक्य प्रतीती परमानंद प्राप्ती दे माझी या भक्ताचे धामी अन्न वस्त्रास नाही कमी ये अर्थी श्री साई दे हमी भक्तासी नेहमी अवगत मज भजती जे अनन्यपणे सेविती नित्यानी युक्त म्हणे तयाचा योगक्षम चालविने ब्रीद हे जाणे मी माझे हेची भगवत गीता वचन साई म्हणती माना प्रमाण नाही अन्न वस्त्राची वान तदर्थ प्राण वेचू नका देवद्वारी मान व्हावा देवा पुढेही पदर पसरावा तयाचाच प्रसाद जोडावा मान सोडावा लौकिकी काय लोकी मान डोलविती ती तुक्याने का भरसी भुली आराध्य मूर्ती चित्ती द्रवली घरमे डबडबली पाहिजे हेची ध्येय लागो गोड सवैद्रियी भक्तीचे वेड इंद्रिय विकारा भक्तीचे मोड फुटो तो कोड मग काय सदैव ऐसे भजन घडो इतर काहीही नावडो मनाम स्मरणी जडो विसर पडो अवघ्याचा नाही मग देह गेह वित्त परमानंदी जडेल चित्त मन समरदर्शी आणि प्रशांत परिपूर्ण निश्चित होईल सत्संग केलिया याची खून वृत्तीसी पाहिजे समाधान नाना ठाई वसे जे मन ते काय सल्लीन म्हणावे तरी होऊनी दत्तावधान श्रोता भावार्थे परिसी जे निरूपण करिता हे साई चरित्र श्रवण भक्ती प्रवण मन होवो कथा संगती होईल तृप्ती लाधेल चंचल मना विश्रांती होईल तळमळीची निवृत्ती सुख संविती पावाल आता पूर्वील कथानुसंधान मशिदीचे जीर्णोद्वार राम जन्माचे
कथा कीर्तन चालवू निरूपण पुढारा. एक भक्त गोपाळ गुंड, जयाची बाबांची भक्ती उदंड. मुखी बाबांचे नाव अखंड, काळ खंडन ये रीती. तयासी नव्हते संतान पुढे, साई प्रसादे करुण पावता झाला. पुत्ररत्न चित्त प्रसन्न झाले गोपाळ गुंडाचे मानस. यात्रा एक अथवा उरुस, भरवावा शिर्डी ग्रामी वर्षास. होईल उल्हास सर्वत्रा, ताता कोते दादा कोते माधवा रावादी प्रमुख जनाते. रुचला विचार हा सकळा ते, तयारीते लागले परी या वार्षिक उत्सवा लागून. आधी एक नियम निर्बंधन, जिल्हाधिकारी यांचे अनुमोदन करणे संपादन आवश्यक. तदर्थ उद्योग करू जाता, गावी जो एक कुळकर्णी होता. कुत्सितपणे उलटा जाता आला मोडता कार्यात. कुळकर्णी जो आडवा पडला, पहा कैसा परिणाम आला. यात्रा भरू नये शिर्डीला, हुकूम झाला जिल्ह्याचा. परी ही यात्रा भरावी शिर्डीत, बाबांचेही हेची मनोगत. आज्ञा पूर्ण आशीर्वादयुक्त होती तदर्थ झालेली. ग्रामस्थांनी पिछा पुरविला, जीवापाड प्रयत्न केला. अधिकाऱ्यासी हुकूम फिरविला, मान राखिला सकळाचा. तेव्हापासून बाबांच्या मते यात्रा ठरविले रामनवमीते. व्यवस्था पाहती तात्या कोते, यात्रा इथे अपरंपार. त्याच रामनवमीचे दिसी भजन पूजन समारंभेसी. तासे चौघडे वाजंत्रेसी, यात्रा चौपासी गडगंज. वर्षास 2 नवी निशाणे, समारंभे होई मिरवणे. मशिदीचे कळसास बांधणे, तेथेची रोवणे अखेर. त्यातील एक निमोणकरांचे दुजे निशाण. दामू अण्णांचे मिरवणे होते, थाटामाटाचे फडकते कळसाचे अग्रभागी. पुढे रामनवमीसी उत्सव, उरुसापोटी कैसा समुद्भव. परिसाते कथानक अभिनव, स्वानंद गौरव शिर्डीचे. शके 1833 साली रामनवमी प्रथम झाली. उरुसापोटी जन्मास आली, तेथून चालली अव्याहत. प्रसिद्ध कृष्ण जागेश्वर भीष्म, तेथून या कल्पनेचा उगम. करावा राम जन्म उपक्रम, लाधेल परम कल्याण. तेथपर्यंत केवळ उरुस यात्रा भरत असे बहुवस. त्यातून हा जन्मोत्सव सुरस आला उदयास ते साली. एकदा भीष्म स्वस्थचित्त, वाडिया माझी असता स्थित. काका पूजा संभार समवेत, जावया मशिदीत उद्युक्त. अंतरी साई दर्शन काज, वरी उरुसासीही मौज. काका आधीच एक रोज शिर्डीत हजर उत्सवास. पाहून या समय उचित. भीष्म तेव्हा काकास पुसत असत. वृत्ती एक मनी स्फुरत, द्याला हा मदत मज लागी. तेथे वर्षास भरतो उरुस, राम जन्माचा हा दिवस. परी जन्मोत्सव संपादयास आहे अनायास ही संधी. काकासा आवडला तो विचार, घ्या म्हणाले बाबाचे होकार आहे तयाचा. आज्ञेवर कार्यास उशीर नाही मग. परी उत्सवा लागे कीर्तन उभा राहिला तोही प्रश्न. खडे गावी हरिदास कोठूनही एक अडचण राहिली. भीष्म म्हणती, मी कीर्तनकार, तुम्ही धरा पेटीचा स्वर. राधा कृष्णा बाई तयार, सुंठवडा वेळेवर करीतील. चला की मग बाबाकडे, विलंब हे शुभकार्या साकडे. शुभाशी जय शीघ्रत्व जोडे, साधे रोकडे ते कार्य. चला आपण पुसावयास आज्ञा, कीर्तन करावयास. ऐसे म्हणताच मशिदेस दोघे ते समयास पातले. काका आरंभ करिता पूजेत, बाबाच जाहले प्रश्न पुसते. काय वाड्यात चालले होते सूचना हे ते काकांना. तात्काळ बाबा भीष्माप्रती तोच प्रश्न अन्य रीती. का बुवा काय म्हणती म्हणून पुसती तया ते. तेव्हा काकासा आठवा आला, उद्दिष्टार्थ निवेदियेला. विचार बाबाचे मनास रुचला. निश्चित केला उत्सव. दुसरे दिवशी प्रातः समयाला पाहुणी बाबा गेले लेंडीला. सभा मंडपी पाळणा बांधिला, थाट केला कीर्तनाचा. पुढे वेळोवेळी श्रोते जमले. बाबा परतले, भीष्म उठले. काका पेटीवर येऊनी बसले. बोलावू पाठविले तयांना. बाबा बोलावी ती तुम्हास. ऐकता काकाचे पोटी धस्य. काय झाले नकळे मनास, कथेचा विरस ना होवो. ऐकुनी बाबांचे निमंत्रण, काकाची तेथीची झाली गाळण. बाबा का बरे शुद्ध मन, निर्विघ्न कीर्तन होईल ना. पुढे चालती मागे पाहती, भीत भीत पायऱ्या चढती. मंद मंद पाऊले पडती, चिंतावरती बहु काका. बाबा
तयास करीती विचारणा कशास येथे बांधिला पाळणा कथा तात्पर्य आणि योजना एकूणी मना आनंदले. मग तेथे जवळ निंबर तेथून घेऊन एक हार घातला काकाच्या कंठी सुंदर. भीष्माकरिता दिला दुजार पाळण्याचा प्रश्न परिसता उपजली होती मोठी चिंता. परी गळा तो हार पडता सर्वांस निश्चिंतता जाहले. आधीच भीष्म बहुश्रुत विविध कथा परांगत कीर्तन जाहले रसभरित आनंद अपरिमित श्रोतया. बाबाही ते प्रसन्न वदन जैसे दिधले अनुमोदन तैसासी उत्सव घेतला करवून कीर्तन भजना समवेत राम जन्माचिया अवसरी. गुलाल बाबाच्या नेत्राभितरी जाऊनी प्रकटले बाबा नरहरी कौसल्ये मंदिरी श्रीराम. गुलालाचे केवळ मिश राम जन्माचा तो आवेश होईल अहम रावणाचा नाश. दुर्वृत्ती राक्षस मरतील एकाएकी आला कोप प्रत्यक्ष नरसिंहाचे रूप. सुरू झाले शिष्याशाप वर्षाव अमुप जाहला पाळण्याचे होतील तुकडे. राधा कृष्णा मणी गडबडे राहील कैसा धडे हे साकडे. येऊनी पडे जीवा तिज लागी सोडा सोडा लवकर सोडा. पाठीसी लागता तिचा लकडा काका सरकले पुढा पाळणा सोडावया ते. तव तो बाबा अति कावले काकाचिया अंगावर धावले. पाळणा सोडणे आधीच राहिले वृत्तीवरी जाहले आले बाबाही पुढे दुपारी. आज्ञा पुसता बाबा काय वदले आश्चर्यता. एव्हाच कैचा पाळणा सोडिता आहे आवश्यकता अजून. ही आवश्यकता तरी कसली अन्यथा नव्हे साई वचनावली. विचार करिता बुद्धी स्फुरली सांगता न झाली उत्सवासी. ते इथवरी उत्सव झाला दुसरा दिन जो नाही उगवला नाही झाला तो गोपाळकाळा. उत्सव सरला न म्हणावे येणे प्रमाणे दुसरे दिवशी गोपाळकाला कीर्तनी होऊनी पाळणा मग सोडावया लागुनी. आज्ञा बाबांनी दिधली. पुढील वर्षी भीष्म नव्हते बाबा बाळाबुवा सातर कराते कीर्तनार्थ आणविते होते जाणे कवठ्याते तयांना. म्हणून बाळाबुवा भजनी प्रसिद्ध अवार्चिन तुका म्हणून घेऊन आले काका महाजनी. उत्सव त्या हातून करविला हेही जरी मिळाले नसते काकाच कीर्तनार्थ उभे राहते. दासगणू कृत आख्यान त्याते पाठची होते नवमीचे. तिसरे वर्षी सातारकर बाळाबुवाचेच शिर्डीवर आगमन झाले वेळेवर. कैसे सादर परिसता ते एकूणी बाबांची कीर्ती. दर्शन काम उद्भवला चित्ती परी मार्गात पाहिजे संगती लाभेल कोयवती ही इच्छा. बाळाबुवा स्वये हरिदास साताऱ्याकडे मूळ रहिवास. मुंबापुरी परेळास होता निवास. ये समयी बिऱ्हाड सिद्ध कवठे म्हणून सातारा जिल्ह्यात देवस्थान. तेथे रामनवमीचे कीर्तन वर्षासम बुवास. आषाढीची एकादशी रामनवमी चैत्रमासी या दोन वार्षिक उत्सवासी बाळाबुवासी संबंध. बादशाही सनद पाहता बडे बाबाचे खर्चाकरिता रुपये चतुर्विंशती शता. मूळ अवस्था संस्थानी असे या दोन उत्सवालागी रुपये त्रिशंत बुवासी विधानी. परी ते वर्षी कवठ्यास मरगी पडेल प्रसंगी ग्रामस्थ. तेने रामनवमी राहिली बुवास तेथून पत्रे आली यावे आता पुढील साली. ग्रामची खाली झालासे सारांश रामाची सेवा चुकली. बिदागी ही जागी राहली शिर्डीस जावया संधी फावली. भेट घेतली दीक्षितांची. दीक्षित बाबाचे परमभक्त शिर्डी गमनाचा मनोगत पुरेल त्यांनी आणिता मनात स्वार्थ परमार्थ साधेल. वदती तैदे दीक्षिता लागुनी यंदा राहिले वर्षा सन घ्यावे वाटे बाबाचे दर्शन. तेथीची कीर्तन करावे भाऊसाहेब तेव्हा वदती. बिदागीची नाही निश्चिती देणे न देणे बाबाचे हाती लागेल संमती कीर्तनासी. इतुके संभाषण चालले असता काका महाजनी येऊनी अवचिता. शिर्डी प्रसाद उदी वाटिता शुभ शकुनता गमली ते. तेची वेळा महाजनी आले होते शिर्डीहुनी क्षेमकुशल वृत्त कळवुनी. मग निज सदनी परतले असो पुढे बुवा प्रति. दीक्षित तेव्हा परम प्रीती म्हणती विचारीन बाबाची संमती. दिधल्या निश्चित कळवीन पत्र येता शिर्डीस यावे. वाट खर्ची लागी न भ्यावे तदर्थ न लगे आपणा झिजावे. निशंक असावे मनात
असो पुढे दीक्षित गेले. बाबांनी अनुमोदनही दिधले. बाळा बुवा शिर्डीस आले. दर्शन घडले यथेष्ट. साई बाबांही सन्मुख सगळा रामनवमीचा उत्सव सोहळा बाळाबुवाच्या हस्ते घेतला. करवणी नवलाव प्रेमाने बाळाबुवाही मनी तुष्टले. चिंतिले कार्य पार पडले. साईही प्रसन्नचित्त जाहले. मनोरथ पुरले सर्वांचे. संभावनाही यथास्थित. शतोपरी 50 रुपये घ्यावया आज्ञा होत. आनंद अपरिमिता बुवास पंचवार्षिक कवट्याची प्राप्ती. एकाच उत्सवी बाबा देती ध्यान. बाळाबुवा कान आनंदती. आभारी होती बाबांचे. असो पुढे एक दिवशी दासगणू येता शिर्डीसी. देववीला प्रार्थुनी बाबांसी उत्सव प्रतिवर्षी तयास. तेथून पुढे हा कालवरी होता हे जन्मोत्सव. गड गजरी अन्न संतर्पणा आकंठवरी महारापोरी आनंद समाधीच्या महाद्वारी मंगलवादाचिया गजरी साई राम नामघोष अंबरी आनंद निर्भरी कोंदाटे. जैसी यात्रा वा उरुस तैसेच स्फुरले गोपाळ गुंडासकी. त्या जीर्ण मशिदीस रूप गोंडस आणावे. मशिदीचाही जीर्णोद्धार व्हावा. आपुले हस्ते साचार भक्त गोपाळ गुंडाचा निर्धार पाषाण तयार करविले. परी हा जीर्णोद्धार योग नवता वाटे गुंडाचा भाग. या विशिष्ट कार्याचा सुयोग आला मजयोग पुढारा. वाटे बाबाच्या होते म्हणी करावे हे नानांनी. फरसबंदी मागाहुनी करावी काकांनी. तदनंतर तैसेची पुढे घडून आले. आधी आज्ञा मागता थकले म्हाळसा. पती मध्यस्थी घातले. अनुमोदन दिधले बाबाही. असो जेव्हा मशिदीसी निशित एका झाली फरशी. तेथून मग दुसरेच दिवशी बाबा गादीसी बैसले. 11 साली सभामंडप तोही प्रचंड खटाटोप. केवढा तरी महाव्याप जाहला थरकाप सळ सकळीता. तेही कार्य रीती एसीच सकल परिस्थिती. असता पूर्ण केली भक्ती. एके रात्री सायासे रात्री प्रयासे खांब दाटावे. सकाळी बाबाही उपटुनी लागावे. अवसर त्या साधूनी पुन्हा चिनावे. ऐसे शिनावे सकळीही सर्वांनी घालावी कास. करावा रात्रीचा दिवस. पुरवावा मनाचा हव्यास. अति सायास सोसुनी आधी येथे उघडे अंगण होते इवलेसे पटांगण. सभामंडप योग्य स्थान जाहले स्फुरण दीक्षिता. लागेल तितुक्या पैका लावूनी लोहाचे खांब कैच्या आणून. बाबा चावडीसी गेलेस पाहून. काम हे साधून घेतले भक्तांनी रात्रीचा करावा दिवस. खांब चिनावे करुणी सायास चावडीतून परतण्याचा अवकाश लागावे उपटण्यास बाबांनी. एकदा अत्यंत कोपायमान एका हाती तात्यांची मान दुय्याने एका खांबास हलवून उपटून काढून पाहत हलवून केला ढिला. तात्यांचे माथ्याचा फेटा काढिला. काढे लावून पेटवून दिला. खड्ड्यात टाकीला त्वेषाने. दया डोळे दिसत जैसे अनल गोळे. सन्मुख पाहिल कोण त्या वेळे. धैर्य गेले सकळाचे. लगेच खिशात हस्त घातला. बाहेर काढला तोही तिथेच निक्षेपीला. जाणो तो केला सुमुहूर्त. शिव्या शापाचा वर्षाव झाला. त्याही मनी बहु घाबरला. प्रसंग निकट आला. प्रकार घडला कैसा हा. जनलोक विस्मयापन्न. हे काय आज आहे दुश्चिन्ह. तात्या पाटलावरी हे विघ्न होईल निवारण कैसे की. भागोजी शिंद्याने धीर केला. हळूहळू पुढे सरकला. तोही आयताच सापडला. यथेष्ट घुमविला बाबांनी. माधवरावही हाती लागले. तेही विटांचा प्रसाद पावले. जे ते मध्यस्थी करावया गेले. वेळीच अनुग्रहिले बाबांनी. बाबा पुढे जाईल कोण. जेवी तात्याची करावी सोडवण म्हणता क्रोधही क्षीण झाला. क्षमण बाबांचा तत्काळ दुकानदार बोलाविला. जरी काठी फेटा आणविला. स्वये तात्यांच्या डोक्यास बांधविला. त्यास आश्चर्यचकित लोक झाला. काय कारण या रागाला. किमर्थ तात्यावरी हा हल्ला केला गिल्ला. बाबांनी कोपास चढले. निमित्त क्षणात पाहता प्रसन्नचित्त. यातील कारण यत्किंचित कोणासही विदित होईना. कधी असत शांतचित्त प्रेमी गोष्टी वार्ता वदत. कधी न लागता निमिषवा निमित्त शुद्धचित्त अवचित. असो ऐशा या बाबाच्या गोष्टी. एक सांगता एक आठवती. सांगू कोणती ठेवू कोणती. प्रपंचवृत्ती बरवीना.
हिंदू की यवन करू निरूपण यथामती दक्षिणामिषे घेऊनी पैसा जीर्णोद्वारा लाविला कैसा धोती पोती खंड दुखंडसा देह कैसा दंडित कैसे परार्थ वेचित कष्ट निवारित भक्त संकट पुढील अध्यायी होईल स्पष्ट श्रोते संतुष्ट होतील स्वस्ती सी संत सज्जन प्रेरित भक्त हेमाड पंत विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरित्रे राम जन्मोद्वादी कथन नाम षष्ठोध्याय संपूर्ण श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु शुभम भवतु. Chapter 7, Wonderful Incarnation, Behavior of Sai Baba, His yogic practices, His all-pervasiveness and mercy, leper devotees service, Master Khaparde's plague case, going to Pandharpur. Wonderful Incarnation, Sai Baba knew all yogic practices. He was well versed in the 6 processes including dhoti, stomach cleaning by a moistened piece of linen 3 inches in breadth and 22.5 inches length, Khanda Yoga, that is separating his limbs and joining them again, and Samadhi, etc. If you think that he was a Hindu, he looked like a Yavan. If you think him to be a Yavan, he looked like a pious Hindu. No one definitely knew whether he was a Hindu or a Mohammedan. He celebrated the Hindu festival of Ram Navami with all due formalities and at the same time permitted the sandal procession of the Mohammedans. He encouraged wrestling bouts in this festival. When the Gokulashtami came, he got the Gopal Kala ceremony duly performed, and on Eid festivals, he allowed the Mohammedans to say their prayers, namaz, in his masjid. Once during a Muharram festival, some Mohammedans proposed to construct a tazia or tabut in the masjid, keep it there for some days, and afterwards take it in procession through village. Sai Baba allowed the keeping of the tabut for 4 days, and on the 5th day, got it removed from the masjid without the least compunction. If we say that he was a Mohammedan, his ears were pierced, had holes according to Hindu custom. If you think that he was a Hindu, he advocated the practice of circumcision, though according to Mr. Nana Sahib Chandorkar, who observed him closely, he was not himself circumcised. Read an article in Sai Leela on Baba Hindu Ki Yavan by B.V. Dev, page 562. If you call him Hindu, he always lived in the masjid. If Mohammedan, he had always the dhuni, sacred fire there, and the following things which are contrary to Mohammedan religion, that is grinding on the hand mill, blowing of the conch and bells, oblation in the fire, bhajan, giving of food and worship of Baba's feet by means of aragya water were allowed there. If you think that he was a Mohammedan, the best of Brahmins and Agnihotris, leaving aside their orthodox ways, fell prostrate at his feet. Those who went to make inquiries about his caste were dumbfounded and were captured by his darshan. So none could definitely decide whether Sai Baba was a Hindu or a Mohammedan. This is no wonder, for he who completely surrenders himself to the Lord by getting rid of his egoism and body consciousness thus becomes one with him and has nothing to do with any question of caste or nationality. Baba saw no difference between any 2 castes and even between beings. He took meat and fish with fakirs but did not grumble when dogs touched the dishes with their mouths. Such a unique and wonderful incarnation was Sai Baba. On account of the merits in my past birth, I had the good fortune to sit at his feet and enjoy his blessed company. The joy and delight I derived therefrom was incomparable. In fact, Sai Baba was pure Anand and consciousness. I cannot sufficiently describe him, his greatness and uniqueness. He who took delight at his feet was established in his own self. Many sannyasis, sadhaks, and all sorts of men aspiring for salvation came to Sai Baba. He always walked, talked, and laughed with them, and always uttered, Allah Malik. God is the sole owner. He never liked discussion or disputation. He was always calm and controlled, though irritable at times, always preached Vedanta, and nobody knew till the last who was Baba.
Princes and poor people were treated alike by him. He knew the inmost secrets of all, and when he gave expression to them, all were surprised. He was a repository of all knowledge, still he feigned ignorance. He also disliked honor, such were the characteristics of Sai Baba. Though he had a human body, his deeds testified to his godhood. All people considered him as the god in Shirdi. Behavior of Sai Baba. Ignorant that I cannot describe Baba's miracles. He got almost all the temples in Shirdi repaired. Through Tatya Patil, the temples of Shani, Ganpati, Shankar Parvati, village deity, and Maruti were put in order. His charity was also remarkable. The money he used to collect as dakshina was freely distributed, rupees 20 to some, rupees 15 or 50 to others every day. People were immensely benefited by having Baba's darshan. Some became hale and hearty. Wicked people were turned into good ones. Kushta leprosy was cured in some cases. Many got their desires fulfilled without any medicine being put in the eyes. Some blind men got back their sight, and some lame ones got their limbs. Nobody could see the end of his extraordinary greatness. His fame spread far and wide, and pilgrims from all sides flocked to Shirdi. Baba had his asan near the dhuni and always rested there. He sat there in meditation, sometimes without a bath. He used to tie a small white turban on his head and wear a clean dhotar round his waist and a shirt on his body. This was his attire in the beginning. He first practiced medicine in the village, examined patients, and gave medicines. He was always successful, and he became famous as a hakim, doctor. A curious case may be narrated here. One devotee had his eyes quite red and swollen. No doctor was available in Shirdi. The other devotees took him to Baba. In such cases, other doctors would use ointments, anjans, cow's milk, and camphorated drugs, etc. Baba's remedy was quite unique. He pounded some biba, some corpus anacardium, that is marking nuts, and made two balls of them and thrust them on in each eye of the patient and wrapped a cloth bandage around them. Next day, the bandage was removed and water was poured over them. The inflammation subsided and the pupils became white and clear. Though the eyes were very delicate, the biba caused no hurt but removed the disease of the eyes. Many such cases were cured, and this is only an instance in this regard. Baba's yogic practices. Baba knew all the processes and practices of yoga. Two of them will be described here. First one, the dhati kriya or cleansing process. Baba went on to the well near banyan tree at a considerable distance from the masjid every third day, washed his mouth and had a bath. On one occasion, he was seen throwing up his intestines, cleaned them inside, outside, and placed them on a jamb tree for drying. There are persons in Shirdi who have actually seen this and who have testified to this fact. Ordinary dhatis done by moistened piece of linen, 3 inches broad, 22 and a half feet long. This piece is gulped down the throat and allowed to remain in the stomach for about half an hour for being reacted there and then taken out. But Baba's dhoti was quite unique and extraordinary. Second, Khanda Yoga. In this practice, Baba extracted the limbs from his body and left them separately at different places in the masjid. Once a gentleman went to the masjid and saw the limbs of Baba lying at separate places. He was much terrified. He first thought of running to the village officers and informing them of Baba being hacked to pieces and murdered. He thought that he would be held responsible as he was the first informant and knew something of the affair, so he kept silent. But next day when he went to the masjid, he was very much surprised to see Baba hale and hearty as before. He thought that what he had seen the previous day was only a dream. Baba practiced yoga since his infancy, and nobody knew or guessed the proficiency he attained. He charged no fees for his cures, became renowned and famous by virtue of his merits, gave health to many a poor and suffering person. This famous doctor of doctors cared not for his interests, but always worked for the good and welfare of others, himself suffering unbearable and terrible pain many a time in the process. One such instance I give below, which will show the all-pervasive and most merciful character of Sai Baba. Baba's all-pervasiveness and mercy. In the year 1910, Baba was sitting near the dhuni on Diwali and warming himself.
He was pushing firewood into the dhuni, which was brightly burning. A little later, instead of pushing logs of wood, Baba pushed his arm into the dhuni. This arm was scorched and burned. This was noticed by the errand boy Madhav and also by Madhav Rao Deshpande Shama. They at once ran to Baba, and Madhav Rao clasped Baba by his waist from behind and dragged him forcibly backward and asked, Deva, for what have you done this? Then Baba came to his senses and replied, The wife of a blacksmith at some distant place was working the bellows of a furnace. Her husband called her. Forgetting that her child was on her lap, she got up hastily and the child slipped into the furnace. I immediately thrust my hand into the furnace and saved the child. I do not mind my arm being burned, but I'm glad that the life of the child is saved. Leper devotee service. On hearing the news of Baba's hand being burnt from Shama, Madharao Deshpande, Mr. Nana Sahib Chandorkar, accompanied by the famous doctor Parmanand of Mumbai with his medical outfit consisting of ointments, lint and bandages, etc., rushed to Shirdi and requested Baba to allow Dr. Parmanand to examine his arm and dress the wound caused by the burn. This was refused. Ever since the burnt arm was dressed by the leper devotee Bhagoji Shinde, his treatment consisted in massaging the burnt part with ghee and then placing a leaf over it and bandaging it tightly. Mr. Nana Sahib Chandorkar solicited Baba many a time to unfasten the bandages, get the wound examined, dressed and treated by Dr. Parmanand with the object that it may heal fast. Dr. Parmanand himself made similar requests, but Baba postponed, saying that Allah was his doctor and did not allow his arm to be examined. Dr. Parmanand's medicines were not exposed to the air of Shirdi and they remained intact, but he had the good fortune of getting a darshan of Baba. Bhagoji was allowed to treat the hand daily. After some days, the arm healed and all were happy. Still, we do not know whether any trace of pain was left or not. Every morning, Bhagoji went through this program of untying the bandages, massaging the arm with ghee, and tightly bandaging it again. This went on till Sai Baba Samadhi. Sai Baba, a perfect Siddha as he was, did not really want this treatment, but out of love for his devotee, he allowed the Upasana service of Bhagoji to go on uninterrupted all along. When Baba started for Lendi, Bhagoji held an umbrella over him and accompanied him. Every morning when Baba sat near the post close to the dhuni, Bhagoji was present and started his service. Bhagoji was a sinner in his past birth. He was suffering from leprosy. His fingers had shrunk. His body was full of pus and smelling badly. Though outwardly he seemed so unfortunate, he was really very lucky and happy, for he was the premier servant of Baba and got the benefit of his company. Master Khaparde's plague case. I shall now relate another instance of Baba's wonderful Leela. Mrs. Khaparde, the wife of Mr. Dada Sahib Khaparde of Amravati, was staying at Shirdi with her young son for some days. One day the son got high fever, which developed into bubonic plague. The mother was frightened and felt most uneasy. She thought of leaving the place for Amravati and went near Baba in the evening. When he was coming near the Wada, now Samadhi Mandir, in his evening rounds for asking his permission, she informed him in a trembling tone that her dear young son was down with plague. Baba spoke kindly and softly to her, saying that the sky is beset with clouds, but they will melt and pass off, and everything will be smooth and clear. So saying, he lifted up his kafni up to the waist and showed to all present 4 fully developed buboes as big as eggs and added, "See how I have to suffer for my devotees. Their difficulties are mine." Seeing this unique and extraordinary deed, Leela, the people were convinced as to how the saints suffer pains for their devotees. The mind of the saints is softer than wax, it is soft in and out as butter. They love their devotees without any idea of gain and regard them as their true relatives. Going to Pandharpur. I shall now close this chapter after relating a story illustrating how Sai Baba loved his devotees and anticipated their wishes and movements. Mr. Nana Sahib Chandorkar, who was a great devotee of Baba, was Mamlatdar at Nandurbar in Khandesh. He
got an order of transfer to Pandharpur, his devotion to Sai Baba bore fruit. As he got an order to go and stay at Pandharpur, which is regarded as the Bhavai Kuntha, heaven on the earth, Nana Sahib had to take immediate charge, so he left for the place without even writing or informing anybody at Shirdi. He wanted to give a surprise visit at Shirdi, his Pandharpur, see and salute his Vithoba, Baba, and then proceed further. Nobody knew of Nana Sahib's departure for Shirdi, but Sai Baba knew all about this as his eyes were everywhere, omniscient. As soon as Nana Sahib approached Nimgaon, a few miles from Shirdi, there was a stir in the masjid at Shirdi. Baba was sitting and talking with Malsapati, Appa Shinde, and Kashiram when he at once said, "Let us all four do some bhajan. The doors of Pandhari are open. Let us merrily sing." Then they began to sing in chorus, the bhava of the song being, "I have to go to Pandharpur and I have to stay on there, for it is the house of my Lord." Baba sang and the devotees followed him. After a short while, Nana Sahib came there with his family, prostrated before Baba, and requested him to accompany them to Pandharpur and stay with them there. This solicitation was not necessary, as the devotees told Nana Sahib that Baba was already in the mood of going to Pandharpur and staying there. Hearing this, Nana Sahib was moved and fell at Baba's feet. Then, after getting Baba's permission, Udi, sacred ashes, and blessings, Nana Sahib left for Pandharpur. There is no end to Baba's stories, but let me now make a halt here, reserving for the next chapter other topics such as importance of human life, Baba's living on alms, Baija Bai service, and other stories. Bow to Sri Sai Baba, peace be to all. Chapter number 8, Importance of Human Birth, Sai Baba begging food, Baija Bai service, Sai Baba's dormitory, his affection for Kushal Chand. As hinted in the last chapter, Hemant Pant now explains at length in his preliminary remarks the importance of human birth and then proceeds to relate how Sai Baba begged his food, how Baija Bai served him, how he slept in the masjid with Tatya Kote Patil and Malsapati, and how he loved Kushal Chand of Rahata. Importance of human birth. In this wonderful universe, God has created billions, according to Hindu Shastra, calculation of creatures or beings, including gods, demigods, insects, beasts, and men, inhabiting heaven, hell, earth, ocean, sky, and other intermediate regions. Of these, those creatures or souls whose merits preponderate go to heaven and live there till they enjoy the fruits of their actions, and when this is done, they are cast down, while their souls whose sins or demerits preponderate go down to hell and suffer the consequences of their misdeeds for as long as they deserve it. When their merits and demerits balance each other, they are born on earth as human beings and are given a chance to work out their salvation. Ultimately, when their merits and demerits are worked out completely, they get their deliverance and become free. To put the matter in a nutshell, souls get their birth or transmigration according to their deeds and evolvement. Special value of the human body. As we all know, 4 things are common to all the creatures: food, sleep, fear, and sexual union. In the case of man, he is endowed with a special faculty with knowledge, with the help of which he can attain God vision, which is impossible in any other birth. It is for this reason that gods envy human species and aspire to be born as men on the earth, so as to get their final deliverance. Some say that there is nothing worse than the human body, which is full of filth, mucus, phlegm, and dirt, which is subject to decay, disease, and death. This is true to a certain extent, but in spite of these drawbacks and defects, the special value of the human body is that man has got the capacity to acquire knowledge. It is only due to the human body, or on account of it, that one can think of the perishable and transitory nature of the body itself and of the world, and have an aversion for the sense enjoyments, and can discriminate between the unreal and the real, and thus attain God vision. So if we reject or neglect the body because it's filthy, we lose the chance of God vision, and if we fondle it and run after sense enjoyments because it is precious, we go to hell.
The proper course, therefore, for us to pursue is the following: that the body should neither be neglected nor fondled, but should be properly cared for, just as a traveler on horseback takes care of his pony on the way till he reaches his destination and returns home. Thus, the body should ever be used or engaged to attain God vision or self realization, which is the supreme end of life. It is said that though God created various sorts of creatures, he was not satisfied, for none of them was able to know and appreciate his work. So he had to create a special being, man, and endow him with a special faculty, knowledge. And when he saw that man was able to appreciate his Leela, marvelous work and intelligence, he was highly pleased and satisfied. So really it is fortunate to get a human body, better still to get birth in a Brahmin family, and best to get an opportunity of having recourse to Sai Baba's feet and surrendering to him. Man's endeavor, realizing how precious the human life is, and knowing that death is certain and may snatch us at any time, we should be ever alert to achieve the object of our life. We should not make the least delay, but make every possible haste to gain our object, just as a king leaves no stone unturned to seek his lost son. So with all earnestness, we should strive to attain our end, self-realization. Casting aside laziness, warding off drowsiness, we should day and night meditate on the self. If we fail to do this, we reduce ourselves to the level of beasts. How to proceed? The most effective, speedy way to gain our object is to approach a worthy saint or sage, Sadguru, who has himself attained God vision. What cannot be achieved by hearing religious discourses and study of religious texts is easily obtained in the company of such worthy souls. Just as the sun only gives us light, which all the stars put together cannot do, so the Sadguru alone imparts spiritual wisdom, which all the sacred books and sermons cannot do. His movements and simple talks give us silent advice. The virtues of forgiveness, calmness, disinterestedness, charity, benevolence, control of mind and body, egolessness, etc., are observed by the disciples as they are being practiced in such pure and holy company. This enlightens their minds and lifts them up spiritually. Sai Baba was such a sage or Sadguru. Though he acted as a fakir, he always engrossed in self. He always loved all beings in whom he saw God or divinity. By pleasures, he was not elated. He was not depressed by misfortunes. A king and a pauper were the same to him. He whose glance would turn a beggar into a king used to beg his food from door to door in Shirdi, and let us now see how he did it. Baba begging food. Blessed are the people of Shirdi in front of whose houses Baba stood as a beggar and called out, "O Mai, give me a piece of bread," and spread out his hand to receive the same. In one hand he carried a tumbrel, and in the other a zoli, that is a rectangular piece of cloth. He daily visited certain houses and went from door to door. Liquid or semi-liquid things such as soup, vegetables, milk or buttermilk were received in the tin pot, while cooked rice, bread and such solid things were taken in the zoli. Baba's tongue knew no taste, as he had acquired control over it. So how could he care for the taste of the different things mixed up together? Whatever things he got in his jholi, in the tin pot, were mixed together and partaken by Baba to his heart's content. Whether particular things were tasty or otherwise was never noticed by Baba, as his tongue was devoid of the sense of taste altogether. Baba begged till noon, but his begging was very irregular. Some days he went a few rounds, on other days up to 12 noon. The food thus collected was kept in a kundi. Dogs, cats, and cows freely ate from it, and Baba never drove them away. The woman who swept the floor of the masjid took some 10 or 12 pieces of bread to her house, and nobody prevented her from doing so. How could he,
who even in dreams never warded off cats and dogs by harsh words and signs, refuse food to poor helpless people. Blessed indeed is the life of such a noble person. People in Shirdi took him in the beginning for a mad fakir. He was known in the village by this name. How could one who live on alms by begging a few crumbs of bread be revered and worshipped? But this fakir was very liberal of heart, detached and charitable. Though he looked restless from outside, he was firm and steady inside. His way was inscrutable. Still, in that small village, there were a few kind and blessed people who recognized and regarded him as great soul. One such instance is given below. Baijabai's brilliant service. Tatya Kote's mother Baijabai used to go to the woods every noon with a basket on her head containing bread and vegetables. She roamed in the jungles after traveling kilometers, trampling bushes and shrubs in search of the mad fakir, and after finding him out, fell at his feet. The fakir sat calm and motionless in meditation, while she placed a leaf before him, spread her things, eatables, bread, vegetables, etc. thereon, and fed him insistently. Wonderful was her faith and service. Every day she roamed at noon in the jungles and insisted Baba to partake of the lunch. Her service, upasana or penance, by whatever name we call it, was never forgotten by Baba till the end. Remembering fully what service she rendered, Baba benefited her son significantly. Both the son and the mother had great faith in the fakir, who was their god. Baba often said to them that fakiri is real, lordship is transient. After some years, Baba left, going into the woods, and began to live in the village and take his food in the masjid. Hence, Baijabai's troubles of roaming in the jungles ended. Dormitory of Trio. Ever blessed are the saints, in whose heart Lord Vasudeva dwells, and fortunate indeed are the devotees who get the benefit of the company of such saints. Two such fortunate fellows, Tatya Kote Patil and Bhagat Malsapati, equally shared the company of Sai Baba. Baba also loved them both. These three persons slept in the masjid with their heads towards the east, west, and north, and with their feet touching one another in the center. After spreading their beds, they lay on them chit-chatting and gossiping till late at night. If any one of them showed any signs of sleep, others would wake him up. For instance, if Tatya began to snore, Baba at once woke up and shook him from side to side and pressed his head. If it was Malsapati, he pulled him close, stroked his legs, and patted his back. In this way, for a period of 14 years, Tatya, leaving his parents at home, slept in the masjid on account of his deep love for Baba. How happy and never to be forgotten were those days. How to measure that love and how to value the grace of Baba. After the passing away of his father, Tatya took charge of the household affairs and began to sleep at home. Kushal Chand of Rahata. Baba loved Ganpat Kote Patil of Shirdi. He equally loved Chandrabhan Sheth Marwadi of Rahata. After the demise of this Sheth, Baba loved his nephew Kushal Chand equally or perhaps more, and looked after his welfare day and night. Sometimes in the bullock cart, at other times in a tonga, with intimate devotees, Baba went to Rahata. People of that village would come out with band and music and receive Baba at the gate of the village and prostrate before him. Then he was taken into the village with great eclat and ceremony. Kushal Chand took Baba to his house, seated him on a comfortable seat, and gave him a good meal. Then they talked freely and merrily for some time, after which Baba returned to Shirdi, giving delight and blessings to all. Shirdi is midway and equidistant from Rahata on one side and Neemgao on the other. Baba never went beyond these places during his lifetime. He never saw any train nor traveled by it. Still, he knew exactly the timings of arrival and departure of all trains. Devotees who acted according to Baba's instructions, given at the time of taking his leave, fared well, while those who disregarded them suffered many a mishap and accident. More about this and other matters will be told in the next chapter. Bow to Sri Sai Baba. Peace be to all. Om Sai.
அத்தியாயம் 9. விடை பெறும்போது சாய்பாபாவின் ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படியாதிருத்தலின் விளைவு, சில நிகழ்ச்சிகள், பிச்சை எடுப்பதும் அதன் அவசியமும், பக்தரின் தர்கட் குடும்பத்தின் அனுபவம், பாபா எவ்வாறு திருப்தியுடன் உண்பிக்கப்பட்டார். முந்தைய அத்தியாயத்தின் முடிவில் விடை பெறும்போது பாபாவின் ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் நன்மை அடைந்தனர் என்றும், அவைகளுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் பல துர்ச்சம்பவங்களுக்கு ஆளானார்கள் என்று மட்டுமே கூறப்பட்டது. சில குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிகளாலும் மற்றும் சம்பவங்களாலும் இக்கூற்று விவரமாக இந்த அத்தியாயத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. சீரடி புனித யாத்திரத்தின் குணாதிசயம். சீரடி புனித யாத்திரையின் ஒரு சிறப்பான வினோதம் என்னவென்றால், எவரும் சீரடியை விட்டு பாபாவின் அனுமதியின்றி அகன்று செல்ல முடியாது. அப்படி செல்வரேயானால் அவர் சொல்லற்கரிய தொல்லைகள் வரவேற்கிறார். ஆனால் எவரேனும் சீரடியை விட்டு வெளியேறி செல்லும்படி பாபாவால் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டால் அவர் அங்கு அதற்கு மேல் தங்கியிருக்க முடியாது. பக்தர்கள் பாபாவிடம் சென்று வந்தனம் செய்து விடை பெற்று செல்லும் போகும்போது அவர் சில யோசனைகள் அல்லது குறிப்புகள் வழங்குவார். இந்த யோசனைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும். இவைகள் பின்பற்றப்படாவிட்டாலும் அல்லது விலக்கப்பட்டுவிட்டு இருந்தாலும் அங்கனம் பாபாவின் தூண்டுரைகளுக்கு மாறாக நடந்தவர்களுக்கு விபத்துகள் நேரிடுவது உறுதி. இதை பற்றி சில நிகழ்ச்சிகளை கீழே குறிப்பிடுகின்றோம். தத்யா கோத்தே பாட்டில். தத்யா கோத்தே பாட்டில் ஒரு முறை கோபாங்கார் கடை வீதிக்கு குதிரை வண்டியில் சென்று கொண்டிருந்தார். அவர் மசூதிக்கு அவசரமாக திரும்பி வந்து பாபாவை வணங்கி தான் கோபாங்கார் கடை வீதிக்கு செல்ல போவதாக கூறினார். பாபாவோ, அவசரப்படாதே, சிறிது தாமதித்து கடை வீதிக்கு செல், கிராமத்தை விட்டு வெளியே செல்லாதே என்றார். ஆனால் போவதற்கு அவருடைய வேகத்தை கண்ட பாபா சாமாவது மாதவராவ் தேஷ்பாண்டேவுடன் அழைத்து செல்லுமாறு கூறினார். இவ்வுத்தரவை பொருட்படுத்தாது தாத்யா கோத்தே உடனே குதிரை வண்டியை ஓட்டிச் சென்றார். 2 குதிரைகளில் ரூபாய் 300 விலையுள்ள குதிரை மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பு கொள்ளாமலும் இருந்தது. சாவல் கூனியை தாண்டிய பிறகு அது தாறுமாறாக ஓட ஆரம்பித்தது. இடுப்பில் சுளுக்கு ஏற்பட்டு கீழே விழுந்து விட்டது. தாத்யா அதிகமாக காயப்படவில்லை. ஆனால் சாய்பாபாவின் உத்தரவை நினைவில் கொண்டார். மற்றொரு சம்பவத்தில் கோல்ஹார் கிராமத்துக்கு செல்லும் போது பாபாவின் நெறிமுறையை மதிக்காமல் குதிரை வண்டியில் சென்றபோது அதுவும் இதே கதிக்கு இலக்காகியது. ஐரோப்பிய பெருந்தகை. சீரடிக்கு ஒரு முறை ஒரு ஐரோப்பிய பெருந்தகை ஏதோ ஒரு குறிக்கோளுடன் நானாஹாவின் அறிமுக குறிப்புடன் வந்தார். ஒரு கூடாரத்தில் சௌகரியமாக தங்க வைக்கப்பட்டார். அவர் பாபாவின் முன் மண்டியிட்டு பாபாவின் கையை முத்தமிட விரும்பினார். எனவே அவர் 3 முறை மசூதிக்குள் நுழைய முயன்றார். ஆனால் அவர் அப்படி செய்வதை பாபா தடுத்து விட்டார். கீழே உள்ள திறந்தவெளி முற்றத்தில் அமர்ந்து பாபாவின் தரிசனத்தை செய்யும்படி கேட்கப்பட்டார். தமக்கு அளிக்கப்பட்ட வரவேற்பை கண்டு மகிழாத ஐரோப்பியர் சீரடியை விட்டு உடனே புறப்பட விரும்பி விடை பெறுவதற்காக வந்தார். பாபா அவரை அடுத்த நாள் போகும்படியும் அவசரப்பட வேண்டாம் என்றும் கூறினார். மக்களும் அவரை பாபாவின் அறிவுரையின்படியே செய்ய வேண்டிக் கொண்டனர். இவற்றையெல்லாம் செவிமடிக்காது அவர் ஒரு குதிரை வண்டியை சீரடியை விட்டு புறப்பட்டார். முதலில் குதிரைகள் ஒழுங்காக ஓடின. ஆனால் ஷாவுல் விஹூர் கிராமத்தை தாண்டியதும் எதிரில் ஒரு சைக்கிள் வந்தது. அதை கண்டு குதிரைகள் மிரண்டு வேகமாக ஓடின. குதிரை வண்டி தலைகீழாக கவிழ்ந்தது. அந்த பெருந்தகை கீழே விழுந்து சிறிது தூரம் தரையில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார். உடனடியே அவர் விடுவிக்கப்பட்டார். என்றாலும் தனக்கு ஏற்பட்ட காயங்களை குணப்படுத்துவதற்காக கோப்பாங்கார் மருத்துவமனைக்கு சென்று படுக்க வேண்டியதாயிற்று. இத்தகைய அனுபவங்கள் கணக்கில் அடங்கா. பாபாவின் ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் விபத்துக்குள்ளானவர்கள் என்றும், அவைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களோ பத்திரமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தனர் என்றும் எல்லா மக்களும் பாடம் கற்றுக்கொண்டனர். பிச்சை எடுப்பதின் தேவை. பிச்சை எடுப்பதை பற்றிய கேள்விக்கு தற்போது திரும்புவோம். பாபா உண்மையிலேயே அத்தகைய பெரிய சிறப்புடையவராக கடவுளாக இருந்தால் தமது வாழ்நாள் முழுக்க பிச்சை எடுக்கும் வழக்கத்தை ஏன் அவர் மேற்கொண்டவராய் இருக்க வேண்டும் என்னும் கேள்வி சிலரது உள்ளத்தில் எழக்கூடும். இக்கேள்வி 2 நோக்கு நிலைகளில் கருதப்பட்டு விடை பெற்று விடலாம். 1. பிச்சை எடுத்து வாழ்வதற்கு உரிமையுள்ள தகுதியான மக்கள் யார்? வம்சாவிருத்தி, செல்வம், புகழ் இம்மூன்று முக்கிய ஆசைகளையும் துறந்து துறவை மேற்கொள்வரே பிச்சை எடுத்து வாழ தகுதியுடையராவார் என்று நமது சாஸ்திரங்கள் பகர்கின்றன. இவர்கள் சமைப்பதற்கு ஏற்பாடுகளை செய்து வீட்டில் உண்ண முடியாது. அவர்களை உண்பிக்க வேண்டிய கடமை இல்லத்தாரின் தோள்களில் விழுகிறது. சாய்பாபா இல்லத்தாருமில்லம் வானப்பிரசித்தருமல்லம்
அவர் பிரம்மச்சரியம் அனுஷ்டித்த ஒரு துறவி, அதாவது சிறு பருவம் முதற்கண்டே துறவியாவார். இப்பிரபஞ்சமே தமது வீடு என்பதும் தாமே பிரபஞ்ச ஆதாரமும் அழிவற்ற பிரம்மமுமாகிய பகவான் வாசுதேவர் என்பதும் அவருடைய உறுதியான அபிப்பிராயமாகும். எனவே அவருக்கு இறந்து உண்ணும் வழக்கத்தை முழு உரிமை இருக்கிறது. 2. மற்றவை கீழ்கண்ட நிலையின்படி பஞ்சுஷ்ருண 5 பாவங்களும் அவைகளின் பிராச்சித்தமும் உணவுப் பொருள்களும் சாப்பாடும் தயாரிப்பதற்காக இல்லத்தார் 5 செயல்கள் அல்லது நடைமுறைகள் மேற்கொள்ள வேண்டியதாயிருக்கிறது. அதாவது கண்டூனி பொடியாக்குதல், வேஷினி அரைத்தல், உத்தகும்பி பானைகளை கழுவுதல், மார்ஜினி பெருக்கி சுத்தப்படுத்தல், சுள்ளி அடுப்பு பற்ற வைத்தல். இச்செயல் முறைகளை எல்லாம் ஏராளமான சிறிய கிருமைகளையும் 5களையும் கொள்வதற்கு ஏதுவாகிறது. இவ்வாறாக இல்லத்தார்கள் ஓரளவு பாவத்தை செய்தவர்களாகிறார்கள். இப்பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக நமது சாஸ்திரங்கள் 5 வகையான தியாகங்களை செய்ய பகர்கின்றன. 1. பிரம்மங்கங்களும் அல்லது பிரம்மத்துக்கும் சமர்ப்பித்தல், வேத அத்தியானம் அல்லது வேத பாராயணம். 2. பித்ரு யக்குலும் மூதையார்களுக்கு சமர்ப்பணம். 3. தேவ யஜ்யம், தேவைகளுக்கு சமர்ப்பித்தல். 4. பூத யக்களும் 5ங்களுக்கு சமர்ப்பணம். 5. மனுஷ்ய ஆதித்ய யக்களும் மனிதர்களுக்கு அழைக்கப்படாத விருந்தாளிகளுக்கும் சமர்ப்பித்தல். சாஸ்திரப்படி இந்த தியாகங்கள் முறையாக அனுசரித்தால் மன தூய்மை பெற்று ஞானமும் தன்னை உணர்வ தலையும் பெற உதவும். பாபா வீட்டுக்கு வீடு சென்றதன் மூலம் இல்லத்தாருக்கு அவர்களின் புனித கடமையை ஞாபகப்படுத்தினர். பாபாவால் அவர்கள் வீட்டிலேயே இங்கனம் பாடம் கற்பிக்கப்பட்டவர்கள் பேறு பெற்ற மக்கள் ஆவார்கள். பக்தர்களின் அனுபவங்கள். இன்னும் அதிக விறுவிறுப்புள்ள விஷயத்திற்கு தற்போது திரும்புவோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா பகவத்கீதையில் ஒரு இலை, மலர், பழம் அன்றி நீர் இவற்றை பக்தியுடன் எவனொருவன் எனக்கு சமர்ப்பிக்கிறானோ அந்த உள்ள தூய்மையுடன் மனிதனின் பக்திமிகு காணிக்கையானது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது என்று கூறியிருக்கிறார். சாய்பாபாவின் விஷயத்தில் ஒரு பக்தர் உண்மையிலே எதையாவது சமர்ப்பிக்க விரும்பி இருந்து பின்னால் அதையே சமர்ப்பிக்க அவர் மறந்து விட்டாராயினும் பாபா அவருக்கு அல்லது அவரது நண்பருக்கு அந்த காணிக்கையை ஞாபகப்படுத்தி அதை அவரை அளிக்கச் செய்து அதையே ஏற்றுக்கொண்டு பக்தரை ஆசீர்வதிக்கின்றார். இது போன்ற சில நிகழ்ச்சிகளை கீழே குறிப்பிட்டிருக்கின்றன. தர்கட் குடும்பம், தந்தையும் மகனும். முன்னர் பிரார்த்தனா சாம்ராஜ்யத்தை சேர்ந்த ராமச்சந்திரா ஆத்மாராம் என்னும் பாபா சாஹேப் தர்கட் சாய்பாபாவின் ஒரு உறுதியான பக்தர் ஆவார். அவருடைய மனைவியும் மகனும் சாய்பாபாவின் அதற்கிணைய அல்லது இன்னும் சற்று அதிகமாகவே கூட அன்பு செலுத்தினர். ஒரு முறை திருமதி துர்கட்டும் அவர்களது மகன் தர்கட்டும் மே மாத விடுமுறைக்கு சீரடிக்கு போவது என தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஆனால் மகன் போக விரும்பவில்லை. காரணம், அவன் பாந்திரா வீட்டை விட்டு போவனாகினில் வீட்டில் சாய்பாபாவின் பூஜை முறையாக கவனிக்கப்பட மாட்டாது என்று அவன் கருதியதே ஆகும். ஏனெனில் அவனது தகப்பனார் பிரார்த்தனா சமாஜத்தை சேர்ந்தவராதலால் சாய்பாபாவின் பெரிய படத்தை பூஜை செய்வதை அவர் லட்சியம் செய்ய மாட்டார் என்று அவன் கருதினார். எனினும் தனது மகன் செய்வதை போன்ற அதே விதமாக தான் பூஜா கர்மங்களை செய்வதாக அவர் உறுதியாக வாக்களித்த பின்பு ஒரு வெள்ளிக்கிழமை இரவு தாயும் மகளும் சீரடிக்கு புறப்பட்டனர். அடுத்த நாள் சனிக்கிழமை திரு தர்கட் அதிகாலையில் எழுந்திருந்து பூஜை செய்வதற்கு முன் நீராடிவிட்டு பூஜை அறையில் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்து, பாபா, எனது மகன் செய்த அதே மாதிரியாக நான் பூஜை செய்ய போகிறேன். ஆனால் தயவு செய்து அதை ஒரு இயந்திரகதியான பயிற்சியாக ஆக்கிவிடாதீர்கள் என்று கூறிக்கொண்டே பூஜை செய்து சில கற்கண்டு கட்டிகளை நைவேத்தியமாக சமர்ப்பித்தார். அக்கற்கண்டு பகல் உணவின் போது பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது. அந்நாள் மாலையும் அதன் பின்னர் ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் நலமாகவே நடந்தேறின. தொடர்ந்து வேலை நாளான திங்கட்கிழமையும் நன்றாகவே கழிந்தது. தனது வாழ்நாளையே இம்மாதிரியான பூஜையை செய்வதறியாத திரு தர்கட் தனது மகனுக்கு வாக்களித்தபடி எல்லாம் மிகவும் திருப்திகரமான முறையிலேயே நடந்தேறி கொண்டிருப்பதில் தனக்குள்ளேயே பெருமளவு நம்பிக்கை பெற்றார். அடுத்த நாளான செவ்வாய் அன்று வழக்கம் போல் காலையில் பூஜைகளை நிகழ்த்திய பின் தனது வேலைக்கு சென்றார். மதியம் வீட்டுக்கு வந்து உணவு பரிமாறப்பட்ட போது பகிர்ந்து கொள்ள கற்கண்டு பிரசாதமும் இல்லாததை கண்டார். அவர் தமது சமையல்காரனை விசாரித்ததில் காலையில் எவ்வித நைவேத்தியம் செய்யப்படவில்லை என்று அறிந்தார். பூஜையின் அந்த அம்சத்தை நிகழ்த்த அவர் அடியோடு மறந்துவிட்டிருந்தார். இது குறித்து தனது இருக்கையை விட்டு எழுந்திருந்து பூஜையில் விழுந்து வணங்கி தம் தவறுதலுக்காக வருத்தம் தெரிவித்து, அதே நேரத்தில் இத்தகைய ஒரு சாதாரணமான நடைமுறையில் விஷயத்தில் வழிகாட்டாததற்கு பாபாவை அவர் கடிந்து கொண்டார். பின்னர் தனது மகனுக்கு உண்மைகளை கூறி ஒரு கடிதம் எழுதி அதை பாபாவின் பாதத்துக்கடியில் வைத்து புறக்கணிப்பதற்காக
தம்மை பொறுத்தருளவும் வேண்டுமாறு எழுதியிருந்தார். செவ்வாய்க்கிழமை மதியத்தில் பாந்திராவில் இது நிகழ்ந்தது. ஏறக்குறைய அதே நேரத்தில் சீரடியில் மத்தியான தீபாரதனை நிகழ்வதற்கு சிறிதே முன்பாக பாபா திருமதி தர்காட்டை நோக்கி, அம்மா, பாந்திராவில் உள்ள உனது வீட்டிற்கு ஏதேனும் உண்ணலாம் என்ற எண்ணத்தோடு சென்றிருந்தேன். கதவு பூட்டப்பட்டிருப்பதைக் கண்டேன். எப்படியோ உள்ளே நுழைந்து, பாவ், திரு தர்கட் நான் உண்பதற்கு ஏதும் விட்டு வைக்கவில்லை என்பதை வருத்தத்துடன் அறிந்தேன். எனவே பசி தணிக்கப்படாமலே திரும்பிவிட்டேன் என்று கூறினார். அப்பெண்மணிக்கு இது ஒன்றும் புரியவில்லை. அருகில் இந்த மகனோ, அதாவது பாந்திராவில் பூஜையில் ஏதோ தவறு நிகழ்ந்திருக்கிறது என்று அனைத்தையும் புரிந்து கொண்டு வீண்டு திரும்பிய பாபாவின் அனுமதியை வேண்டினார். பாபா இதை மறுத்தார். எனினும் இங்கேயே அப்பையனை பூஜை செய்ய அனுமதித்தார். அப்போது சீரடிக்கு நிகழ்ந்த விபரங்களை எல்லாம் பற்றி பையன் தகப்பனாருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி வீட்டில் பூஜையை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம் என்று மன்றாடி வேண்டியிருந்தான். 2 கடிதங்களும் ஒன்றை ஒன்று தாண்டி போய் இருவருக்கும் அடுத்த நாள் கிடைத்தது. இது ஒரு அற்புதமல்லவா? திருமதி தார்காட். தற்போது திருமதி தர்காட்டின் நிகழ்ச்சியை எடுத்துக்கொள்ளும். அவள் 3 பொருள்களை சமர்ப்பித்தாள். அதாவது பரித், தயிருடனும் வாசை பொருள்களுடனும் கழிந்த கத்திரிக்காய், 2 கச்சரியா, நெய்யினால் வறுக்கப்பட்ட கத்திரிக்காயின் வட்ட துண்டுகள், 3 பேடா, இனிப்பு கோலா. இவற்றை பாபா எங்கனம் ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை பார்ப்போம். ஒரு முறை பாபாவின் பெரும் பக்தரான புரந்தாராவை சேர்ந்த திரு ரகுவீர் பாஸ்கர் புரந்தரே என்பவர் சீரடிக்கு தன் குடும்பத்துடன் புறப்பட்டார். பாந்தராவில் திருமதி புரந்தரையிடம் திருமதி தர்கட் சென்று அவர்களுக்கு 2 கத்திரிக்காய்கள் அளித்து, சீரடியில் ஒரு கத்திரிக்காயில் பிரீத்தும் மற்றதில் கார்ச்சாயும் செய்து பாபாக்கே அவற்றை பரிமாறும்படியும் கூறியிருந்தார்கள். சீரடி அடைந்த பின்னர் திருமதி புரந்தரே தனது பரித்து கத்திரிக்காய் பதார்த்தத்துடன் மசூதிக்கு சென்ற அதே தருணத்தில் பாபா தமது சாப்பாட்டிற்காக அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். பாபா பிரீத் மிகவும் ருசியாக இருப்பதைக் கண்டார். எனவே அவர் அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளித்து தனக்கு இப்போது காச்சரியா வேண்டுமென கூறினார். ராதா கிருஷ்ணமாய்க்கு பாபா காச்சரியங்கள் வேண்டுகிறார் என கூறி அனுப்பப்பட்டது. இது கத்திரிக்காய் சீசன் இல்லாததனால் அவள் குழப்பமடைந்தாள். கத்திரிக்காயை எப்படி பெறுவது என்பதே தற்போதைய பிரச்சனை. பிரீத்தை யார் கொண்டு வந்தார் என்று விசாரிக்கப்பட்டதில் காச்சரியா பரிமாற்றம் பணியிலும் திருமதி புரந்தரே ஒப்புவிக்கப்பட்டிருந்தாள் என அறியப்பட்டது. காச்சரியாவை பற்றி பாபாவின் வேண்டுதலின் உட்குறிப்பை அனைவரும் அறிய தலையப்பட்டனர். எங்கும் வியாபித்திருக்கும் அவர் தம் ஞானத்தைக் கண்ட அனைவரும் ஆச்சரியத்தில் செயலிழந்தனர். 1915 வருடம் டிசம்பர் மாதத்தில் கோவிந்த பலாராம் மானக்கர் என்பவர் தனது தந்தையின் சிவதசங்களை எல்லாம் செய்வதற்காக சீரடிக்கு செல்ல விரும்பினார். புறப்படுவதற்கு முன் திருமதி தர்கட்டை பார்க்க வந்தார். அப்போது பாபாவுக்கு ஏதேனும் கொடுத்தனுப்ப வேண்டும் என்று திருமதி தர்கட் நினைத்தாள். வீடு அனைத்திலும் தேடி முன்னமே நைவேத்தியமாக அளிக்கப்பட்டிருந்த பேடா ஒன்றை தவிர வேறு எதுவும் அவள் காணவில்லை. பையன் கோவிந்த் மிகவும் துயர்கொண்ட நிலையில் இருந்தான். எனினும் பாபாவிடம் கொண்டுள்ள பெரும் பக்தியின் காரணமாக அவனிடம் பேடாவை கொடுத்து அனுப்பினாள். பாபா அதனை ஏற்றுக்கொள்வார் என நம்பினாள். கோவிந்த் சீரடிக்கு சென்று பாபாவை கண்டான். ஆனால் பேடாவுடன் தன்னுடன் எடுத்துச் செல்ல மறந்துவிட்டான். பாபா பொறுத்திருந்தார். மறுபடியும் மாலையில் சென்ற போதும் பேடாவை கொண்டு செல்லாமல் வெறுங்குடையும் சென்றான். பாபா இதற்கு மேல் பொறுக்க இயலாதவர், எனக்கு நீ என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறாய் என்று கேட்டார். ஒன்றுமில்லை என பதில் வந்தது. மீண்டும் பாபா அவனை கேட்ட அதே பதில் தான் அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் பாபா, நீ புறப்படும் போது அம்மா உன்னிடம் எனக்காக இனிப்பு பலகாரம் கொடுக்கவில்லையா என்று குறிப்பான வினா ஒன்று கேட்டார். உடனே பையனுக்கு எல்லாம் நினைவு வந்தது. வெட்கமடைந்த பாபாவிடம் தன்னை மன்னிக்க வேண்டிக் கொண்டு தான் இந்த இடத்துக்கு ஓடிப்போய் பேடாவை கொண்டு வந்து பாபாவிடம் கொடுத்தான். கையில் அதை பெற்ற உடனே பாபா வாய்விட்டு பேராரவளுடன் விழுங்கிவிட்டார். இவ்வாறாக திருமதி தர்கட்டின் பக்தி கண்டுணரப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. மனிதர் எவ்விதம் என்னை நம்புகின்றார்களோ அவ்விதமே நான் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். கீதை 4:11 என்பது இந்நிகழ்ச்சியால் நிரூபிக்கப்பட்டது. பாபா எவ்வாறு திருப்தியுடன் உண்பிக்கப்பட்டார். ஒருமுறை திருமதி தர்கட் சீரடியில் ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டில் தங்கியிருந்தார். மதிய உணவு தயாராகி பதார்த்தங்களை பரிமாறப்படும் போது பசியுள்ள ஒரு நாய்க்கு அங்கு வந்து குறைக்கத் தொடங்கியது. திருமதி தர்கட் உடனே எழுந்திருந்து ஒரு ரொட்டி துண்டை விட்டெறியும். அது மிகுந்த சுவையுணர்வோடு அதை கவ்வி அதனை விரைவாக விழுங்கிவிட்டது. பிற்பகல் அவள் மசூதிக்கு சென்று தூரத்தில் அமர்ந்திருந்த போது சாய்பாபா அவளிடம், அம்மா, நான் பெருமளவு திருப்தியுறும் வகையில் எனது பிராணங்கள் யாவும் நிறைவு பெற்றன. இவ்விதமாக எப்போதும் நடப்பாயாக. இது உன்னை நன்னிலையில் வைக்கும். இம்மசூதியில் அமர்ந்து கொண்டு பொய் பேசவே மாட்டேன். என்னிடம் இவ்விதமாக இரக்கம் கொள்வாய். முதலில் பசியாக இருக்கும்போது உணவு கொடுத்து பின் உண்ணுவாயாக. இதை நன்றாக கவனித்துக்கொள் என்று கூறினார். முதலில் அவளால் இதன் பொருளை உணர இயலவில்லை. எனவே அவள், அங்ஙனம் நான் தங்களுக்கு உணவு அளித்திருக்க முடியும். நானே உணவுக்கு மற்றவர்களை சார்ந்து பணம் கொடுத்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என கூறினாள். இதற்கு பாபா, அந்த கவர்ச்சிமிகு ரொட்டியை உண்டு நான் மனப்பூர்வமாக திருப்தி
நீ பார்த்து ரொட்டி அளித்து நாயானது என்னுடன் ஒன்றியதாகும். இவ்வாறவே மற்ற உயிரினங்களும் பூனைகள், பன்றிகள், ஈக்கள், பசுக்கள் முதலியன என்னுடன் ஒன்றானவைகளாகும். நான் இவைகளின் உருவத்தில் உலாவிக் கொண்டு இருக்கிறேன். என்னை இவ்வனைத்து உயிர்களிலும் பார்க்கின்றவன் எனக்கு உகந்தவன். எனவே துவைத்தையும் பேதத்தையும் ஒழித்து இன்று செய்ததைப் போல் எனக்கு சேவை செய் என்று கூறினார். இவ்வமிர்தத்தினை நிகர்மொழிகளை கேட்டு அவள் உருகி, அவள் கண்கள் பனித்து, தொண்டை அடைத்து, அவள் மகிழ்ச்சி எல்லையுற்றதாக ஆக்கியது. நீதி: கடவுளை எல்லா படைப்புயிர்களும் காண்பாயாக என்பதே இவ்வாத்தியத்தின் நீதியாகும். உபனிஷிகள், கீதை, பாகவதம் இவைகளெல்லாம் ஜீவராசிகள் அனைத்திலும் கடவுள் அல்லது தெய்வீகத்தை காணும்படியாகவே வற்புறுத்தி அறிவுறுத்துகின்றன. இவ்வத்தியாயத்தின் முடிவில் சொல்லப்பட்ட நிகழ்ச்சியாலும் இன்னும் பல சந்தர்ப்பங்களில் உபநிஷத்து போதனைகளை எவ்வாறு நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவது என்று சாய்பாபா விளக்கி காட்டியிருக்கிறார். இவ்வாறாக சாய்பாபா உபநிஷத்தின் விரிவுரையாளராக அல்லது குருவாக இருந்தருளினார். ஸ்ரீ ஸ்ரீ சாய்பாபாவை பணிக. அனைவருக்கும் சாந்தி நிலவட்டும். அத்தியாயம் 10. சாய்பாபாவின் வாழ்க்கை நடைமுறை. அவர் படுக்கும் பலகை. சீரடியில் அவரின் வாசம், அவரின் அறிவுரைகள், அவரின் பணிவு, மிகவும் எளிய வாழ்வு. அன்புடன் எப்போதும் அவரையே சாய்பாபாவே நினைவிட்டுக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் அனைவருக்கும் நன்மை செய்யும் கவனத்தால் கவரப்பட்டு ஆத்மாவிலே உறைந்து நின்றார். வாழ்வு சாவு எனும் புதிரை விடுவிக்கும் வழி அவரை மனத்தில் இருத்திக் கொள்வதே மட்டுமே சாதனைக்குள்ளேயே. இதுதான் மிக மிக எளியதும் சிறந்ததுமான சாதனையாகும். ஏனெனில் அது எவ்வித சிலுவையும் உள்ளடக்காது. இங்கு சிறு முயற்சி பெரும் பரிசுகளை கொணர்கிறது. நமது புலன்கள் எல்லாம் நல்ல முறையில் இருந்தோறும் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் இந்த சாதனையை பழக வேண்டும். மற்ற எல்லா தேவதைகளும் வெற்று தோற்றமே. குருவே ஒரே கடவுள். சத்குருவின் புனித திருவடிகளை நினைவு கூறுவோமானால் அவர் மேலும் சிறப்பான நிலைக்கு நமது அதிர்ஷ்டத்தை மாற்றிவிட இயலும். அவருக்கு சிறப்பாக சேவை செய்வோமானால் நாம் நமது சம்சாரத்தென்று விடுபடுகின்றோம். நியாயம், மிமிசை போன்ற தத்துவங்கள் நாம் பயில தேவையில்லை. அவரை நமது வழிகாட்டியாக நாம் அமைத்துக் கொள்வோமானால் நமது அனைத்து துன்பங்கள், கவலைகள் என்னும் கடலை எளிதாக கடந்து செல்லலாம். ஆற்றையும் கடலையும் கடப்பதிலும் நாம் மாலுமியை நம்பி இருப்பதைப் போன்றே இவ்வுலக வாழ்வெனும் கடலை கடப்பதில் நமது சத்குருவை நாம் நம்ப வேண்டும். தமது அடியவர்களின் தீவிரமான உணர்வையும் பக்தியும் அவர் நோக்கி ஞானத்தையும் சாசுவதமான கருவேறுவகையும் அவர்களுக்கு உரித்தாகிறார். கடந்த அத்தியாயத்தில் பாபாவின் பிச்சையை பற்றியும் பக்தர்களின் அனுபவங்கள் பற்றியும் மற்ற விஷயங்கள் பற்றியும் கூறப்பட்டது. பாபா எவ்வாறு வாழ்ந்தார் என்றும், எவ்வாறு தூங்கினார் என்றும், எவ்வாறு கற்பித்தார் என்றும் வாசகர்கள் தற்போது கேட்பார்களாக. பாபாவின் அற்புதமான படுக்கும் பலகை. பாபா எங்கு எவ்வாறு தூங்கினார் என்பதை காண்போம். 4 முழம் நீளமும் 1 முழம் அகலமும் உள்ள பலகையை பாபா படுத்து உறங்குவதற்காக திரு நானா சாஹிப் டோங்லே கொண்டாந்தார். அதனை திரையில் போட்டு அதன் மீது படுத்து உறங்குவதற்கு பதிலாக மசூதியில் உத்தரங்கள் இற்றுப்போன கந்தல் துணிகளால் அதை ஒரு ஊஞ்சல் போல் கட்டி அதன் மேல் படுத்துறங்க ஆரம்பித்தார். எப்படி பாபாவின் உடலை தாங்குகிறது என்பது ஒரு புறம் இருக்க, தனியாக படுக்கையே தாங்குவது பிரச்சனையாக உள்ள அளவுக்கு அத்துணி மெல்லியதாகவும் இற்றுப்போய் அக்கந்தல் துணி இருந்தது. ஆனால் எந்த விதமாகவோ பாபாவின் நிலையால் மட்டுமே அக்கந்தல் துணி பாபாவின் கனத்துடன் பலகையும் தாங்கவே செய்தது. பலகையின் 4 மூலைகளும் மூளைக்கு ஒரு மண் விளக்கு வீதம் ஏற்றி இரவு முழுவதும் எரிந்து கொண்டிருக்கும்படியாக வைப்பார். இப்பலகையின் மீது பாபா அமர்ந்து கொண்டிருப்பதையோ துவன்று கொண்டிருப்பதையோ கண்ணுறும் தரிசனமானது தேவர்களுக்கு கிடைப்பதற்கு அரியதொன்றாகும். அதில் பாபா எங்கனம் ஏற்றி இறங்கினார் என்பது அனைவருக்கும் வியப்பை விளைவிப்பதாக இருந்தது. இதனை அறியும் ஆர்வத்துடன் பாபா ஏறுவகையும் இறங்குவகையும் காண்பதற்காக பல கவனமுள்ள பார்வையாளர்கள் கவனித்துக் கொண்டிருந்த போதிலும் ஒருவரும் அதனை காண்பதில் வெற்றி பெறவில்லை. இவ்விசித்திரமான அருஞ்செயலை நுணுக்கி காண்பதற்காக கூட்டம் அதிகரிக்கவே ஒரு நாள் பாபா பலகையை துண்டு துண்டாகளாக உடைத்து எரிந்துவிட்டார். 8 விதமான சிஸ்திகளும் பாபாவின் ஆணையில் இருந்தன. அவைகளை ஒருபோதும் பயிற்சிக்கவோ அல்லது அவைகளுக்கு ஏங்கவோ இல்லை. அவைகளின் பாபாவின் உரிமையால் தாமாகவே அவரை வந்தெய்தின. பிரம்மத்தின் உருவ வழிபாடு. 5 அடி 3 அங்குலம் உயரமுள்ள பாபா மனிதனைப் போல தோற்றமளித்தாலும் அனைவரின் இதயத்திலும் அவர் வாழ்ந்தார். அந்தரமாக அவர் பந்தமற்றவராகவும் அக்கறையற்றவராக இருந்தாலும் பகிரங்கத்தில் பொது மக்களின் நலத்தை விரும்பினார். அகத்தில் மிகவும் ஆர்வமுற்றவராக இருப்பினும் புறத்தில் தமது பக்தர்களுக்கு ஆசைகள் நிரம்ப பெற்றவராக இருந்தார். உள்ளே சாந்தத்தின் இருப்பிடமாக அவர் இருப்பினும் வெளியில் இருப்பு கொள்ளாதவராக இருந்தார். அந்தரங்கமாக பிரம்மானந்த நிலையை அவர் எய்தவராக இருந்தார். பகிரங்கமாக பிசாசை போன்று நடந்து கொண்டார். அந்தரமாக அவர் அத்வைத்தை விரும்பினார். பகிரங்கமாக உலகோடு காட்பட்டவராக இருந்தார். சில நேரங்களில் அனைவரையும் பாசம் ததும்ப தூக்கினார். சில சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் மீது கற்களை விட்டெறிந்தார். சில சமயம் அவர்களை கடிந்து கொண்டார். சில சந்தர்ப்பங்கள் அவர்களை அன்புடன் அரவணைத்து அமைதியாகவும் பதட்டமற்றவராகவும் பொறுமையுள்ளவராகவும் நல்ல சமநிலை உள்ளவராகவும் இருந்தார். ஆத்மாவில் உறைந்து
இதனாலேயே கவரப்பட்டு அதன் வயமாகவே ஆனார். தமது பக்தர்களுக்கு செய்ய வேண்டியவற்றை நன்கு செய்து முடித்தார். எப்போதும் அவர் ஒரே ஆசனத்தில் அமர்ந்த ஒருபோதும் பிரயாணம் செய்யவில்லை. அவரது தண்டம் சிறு குச்சியோகம். அதை எப்போதும் தமது கையில் எடுத்துச் சென்றார். சாந்தமாகவும் எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டவராகவும் இருந்தார். செல்வத்தையும் புகழையும் அவர் லட்சியம் செய்யாது பிச்சை எடுத்தே வாழ்ந்தார். இத்தகைய வாழ்க்கையே அவர் நடத்தினார். அல்லாஹ் மாலிக், இறைவனே எஜமானாவான் என்று அவர் எப்போதும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். அடியவர்களிடம் அவர் கொண்டிருந்த அன்பு ஏராளமானது, தடையற்றதுமாகவும் ஆத்மா ஞான சுரங்கமாகவும் பரமானந்த முழுமையும் நிரம்ப பெற்றவராகவும் இருந்தார். சாய்பாபாவின் தெய்வீக ரூபம் இத்தகையது. அத்தகைய எல்லையற்ற முடிவற்ற பாகுபாடற்ற பூண்டிலிருந்து பிரம்மா வரையுள்ள பிரபஞ்ச அனைத்தும் அரவணைக்கும் ஏக தத்துவமே சாய்பாபாவாக அவதரித்தது. உண்மையில் தகமையில் நல்ல அதிர்ஷ்டம் பெற்ற மக்கள் தங்கள் கைகளில் இந்த பொக்கிஷ புதையலை பெற்றனர். சாய்பாபாவின் உண்மையான மதிப்பை அறியாதவர்கள் அவற்றை ஒரு மனிதனாக சாதாரண மானிட பிறவையாக கருதுகிறார்கள். அவர்கள் உண்மையிலே பரிதாபத்துக்குரியவர்களாகிறார்கள். பாபாவின் சீரடி வாசமும் பிறந்த ஆண்டு பற்றிய அனுமானமும். சாய்பாபாவின் சரியான பிறந்த நாளையும் அவரது பெற்றோரையும் ஒருவரும் அறியார்கள். அவரது சீரடி வாசத்திலிருந்து அவர் ஏறக்குறைய தீர்மானிக்கலாம். அவர் 16 வயது பையனாக இருக்கும்போது முதலில் சீரடிக்கு வந்தார். 3 ஆண்டுகள் அங்கு தங்கியிருந்தார். பின்னர் திடீரென்று சில காலம் மறைந்து விட்டார். சிறிது காலத்துக்கு பின் நைஜாம் அவுலங்காபாத்தில் அருகில் 20 வயது நிரம்பி இருக்கும் போது தோன்றினார். மீண்டும் சீரடிக்கு சாந்த பாட்டலின் கல்யாண கோஷ்டியுடன் திரும்பினார். பின்னர் தடையற்ற 60 ஆண்டுகள் அவர் சீரடியில் வாழ்ந்தார். அதற்கு பின்னர் 1918ஆம் ஆண்டில் மகா சமாதி அடைந்தார். இதிலிருந்து பாபாவின் பிறந்தவரிடம் ஏறக்குறைய 1838ஆக இருக்கலாம் என்று கூற இயலும். பாபா மேற்கொண்ட பணியும் உபதேசம். முனிவர் ராமதாஸ் 1908 1681 17ஆம் நூற்றாண்டில் செழித்தோங்கி விளங்கினார். பசுக்களையும் அந்தணர்களையும் யவனர்களிடமிருந்து மொகாலகமிலிருந்து காப்பாற்றுதல் என்னும் தான் மேற்கொண்ட குறிக்கோள் பணித்திட்டத்தை பெருமளவுக்கு நிறைவு செய்தார். ஆனால் அவருக்கு 2 நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்னர் இரு வகுப்பினர்களுக்குள்ளும் மீண்டும் இந்து முஸ்லிம்களுக்குள் வேற்றுமை அதிகரித்து அந்த பாதாள பள்ளத்தினை இணைக்கும் பாலமாக சாய்பாபாவின் விஜயம் செய்தார். அனைவருக்கும் அவர் தம் நிரந்தரமான உபதேசத்தின் உட்கருத்து இவ்வாறானதாகும். ராமரும் இந்துக்களின் தெய்வம், ரஹீமும் முஸ்லிம்களின் தெய்வம் ஒன்றுதான். அவர்களுக்குள் என்றளவும் வேற்றுமை இல்லை. பின்னர் ஏன் அவர்களின் அடியவர்கள் சச்சரவு புரிந்து தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொள்கின்றனர்? கலங்கப்படு அறியாத மக்களாய நீங்களும் குழந்தைகளைப் போல் கைகளை கோர்த்து இரு வகுப்பினரையும் ஒன்றாக இணைத்து விவேகத்துடன் நடந்து கொள்ளுங்கள். இங்கனமாக உங்களது குறிக்கோளாகிய தேசிய ஒற்றுமையை நீங்கள் ஈட்டப் பெறுவீர்கள். போராடி வாதாடுதல் நன்றன்று. எனவே விவாதிக்க வேண்டாம், மற்றவர்களுடன் போட்டி போட வேண்டாம். எப்போதும் உங்களது அக்கரணையும் நலத்தினையும் கருத்தில் கொள்வீர்களாக. கடவுள் உங்களை காப்பாற்றுவார். யோகம், தியாகம், தவம், ஞானம் என்பன கடவுள் அறியும் நெறிகள். இந்த வழிகள் எதிலேனும் ஒன்றின் மூலம் நீங்கள் இதில் வெற்றி பெற்ற இயலாவிடால் உங்கள் பிறப்பு வீணே ஆகும். யாரேனும் ஏதாவது தீமையை உங்களுக்கு செய்வாராகில் அவ்வாறாக பழிக்கு பழி வாங்காதீர்கள். நீங்கள் ஏதேனும் செய்ய இயலுமானால் பிறருக்கு சிறிது நன்மைகளை செய்வீராக. இது அனைவருக்கும் சாய்பாபா அளித்த உபதேசத்தின் சுருக்கம். இது லௌகீக ஆன்மீக விஷயங்கள் இரண்டிலுமே நலம் பயப்படவாகும். சத்குருவாக சாய்பாபா. ஏராளமான குருக்கள் இருக்கின்றார்கள். தங்கள் கரங்களில் ஜால்ரா, தாளக்கருவி, வீணை சகிதம் வீடுதோறும் சென்று தமது ஆத்மீகத்தை படோபடம் செய்து கொள்ளும் குருக்கள் உண்டு. அவர்கள் மந்திரங்களை தமது சீடர்களின் காதில் ஊதி அவர்களிடந்து பணத்தை கறப்பர். தமது சீடர்களுக்கு கடவுள் பற்றையும் கடவுள் நம்பிக்கையும் உபதேசிப்பதாக உணர்ச்சி வகையில் வெளிப்படையாக காட்டிக் கொள்வார். ஆனால் தாங்களே கடவுள் பற்றற்றவராகவும் இருப்பார். ஆனால் சாய்பாபா தமது தகைமையும் கடவுள் பற்று மெய்யுணர்வையும் காண்பிப்பதற்கு எவ்வித சிறிய முயற்சியும் எடுக்கவே இல்லை. அடியவர்களிடம் பெருமளவு அன்பு கொண்டிருந்தார். 2 விதமான குருக்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று நியமிக்கப்பட்டவர், குறிக்கப்பட்டவர். 2 நியமிக்கப்படாதவர், பொதுவானவர். பின்னவர்கள் தங்கள் உபதேசங்களால் நம்மிடத்தில் உள்ள நற்பண்புகளை அபிவிருத்தி செய்கின்றனர். நமது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறார்கள். நம்மை வீடு போன்றும் அடையும் பாதையில் செல்ல தூண்டுகிறார்கள். அதற்கு மாறுபாடாக முன்னவர்களாகிய குருக்களே நமது தனி இயல்பை, பேத உணர்வை அளித்து நீயே அது என்று உணரச் செய்து நம்மை ஏத்வாகத்தில் ஸ்தாபிக்கின்றனர். பல்வேறு வகையான உலக ஞானத்தை அளிக்கும் பல திறத்தான குருக்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் நமது இயற்கையில் ஆத்மாவில் நிலைப்படுத்தி உலக வாழ்வென்றும் சாகரத்துக்கு அப்பால் நம்மை சுமந்து செல்வரே சத்குரு எனப்படுவர். சாய்பாபா அத்தகைய ஒரு சத்குரு ஆவார். அவருடைய பெருமைகளை விவரிக்க இயலாது. யாரேனும் பாபாவின் தரிசனத்தை பெற சென்றால் கேட்கப்படாமலேயே அவரது கடந்த கால நிகழ்வுகளை, எதிர்காலங்களில் ஒவ்வொரு விவரத்தையும் உரைப்பார். எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லா தெய்வீகத்தையும் கண்டார். நண்பர்களும் பகைவர்களும் அவருக்கு ஒன்றே.
அவ்வாறற்ற அவர் சமன் செய்யப்படவராகவும் இருந்த அவர் தீயோருக்கு கட்டுப்பட்டு செவி சாய்ச்சார். சுபிட்சத்திலும் துரதிருஷ்டிலும் அவர் ஒரே மாதிரியாக இருந்தார். எப்போதும் எந்தவித ஐயமும் அவரை தீண்டவில்லை. இவ்வுடம்பில் அவர் இயங்கினார் என்றால் எவ்வளவும் தமது உடம்பிலோ வீட்டிலோ பற்றவராகவே இருந்தார். உடலுறு கொண்டு அவர் தோற்றமளித்தாலும் உண்மையில் அருவமானவர், அதாவது இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலையானவர். பாபாவின் பணியுடைமை பரமாத்மா அல்லது கடவுள் 6 குணாதேசங்களை உடையவராக கூறப்படுகின்றது. அதாவது புகழ், செல்வம், பற்றின்மை, ஞானம், பேராற்றல், வல்லாண்மை ஆகியவையாகும். பாபா இவை அனைத்தையும் தன்னிடம் துடையவராகவும் விளங்கினார். இவ்வுடம்பில் அடியவர்களுக்காக அவதரித்த அவரது அருளும் அன்பும் அதிசயத்தக்கவை. ஏனெனில் தமது அடியவர்கள் தம்மிடம் ஈர்த்து இழுத்தார். இல்லாவிடில் யார்தான் அவரை அறிந்திருக்க இயலும்? அவர் தமது பக்தர்கள் பொருட்டாக வாக்கின் தெய்வம் சரஸ்வதி தேவி கூட உரைக்க தனியாத அத்தகைய சொற்களை அவர் கூறினார். இதற்கு உடனும் அவர் எளிமையாக பின்வருமாறு கூறினார்: நான் அடிமைகளுக்குள் அடிமை, உங்களுக்கு கடன்பட்டவன். உங்கள் தரிசனத்திலே திருப்தி அடைகிறேன். தங்களது திருவடிகளை தரிசிக்கும் பெரும் பாக்கியம் பெற்றேன். நான் தங்களது மலத்திலுள்ள ஒரு பூ அங்கனமாகவே என்னை நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக கருதுகிறேன். எத்தகைய பணியுடைமை! இத்தகைய பிரசுரிப்பதன் மூலம் சாய்க்கு எத்தகைய அவமரியாதை செய்யப்படாது என்பது எவரேனும் நினைப்பார்கள் அவர்கள் மன்னிப்பை வேண்டிக் கொள்கிறோம். இதற்கு பிராயச்சித்தமாக பாபாவின் நாமத்தை பாடி ஜெபிப்போம். பாபா வெளிப்படையாக உணர்ச்சி நுகர்வு கோரு பொருள்களால் மகிழ்வர் போர் தோன்றினாலும் அவர் அவைகளை எவ்வளவும் தனிச்சுவை திறமில்லை. அவைகளை மகிழ்ந்து அனுபவிக்கும் பிரஞ்சை கூட இருந்ததில்லை. அவர் உண்டார் எனில் சுவை அறியவில்லை, பார்த்தார் எனில் பார்த்தவர்களில் அவர் எவ்வித விருப்பையும் உணர்ந்திருக்கவில்லை. காம உணர்வுகளை பற்றி கருத்துங்கள். அவர் ஹனுமானை போன்ற பூரண பிரம்மச்சரியம் ஆவார். இதன்பாலும் பற்றற்றவராக இருந்த அவரே தூய உணர்வுகளின் திரளாகவும் ஆசை, கோபம் மற்ற உணர்ச்சிகள் அடங்கி அமைதியுறும் இடமாகவும் திகழ்ந்தார். சுருக்கமாக அவர் அவ்வாறற்றவர், காற்றற்றவர், முழு நிறைவானவர். இக்கூற்றை சித்தரிக்கும் போது ஒரு அதிசய நிகழ்ச்சியை கூறலாம். நானாவல்லி சீரடியில் நானாவலி என்னும் பெயரில் தனிப்போக்குள்ள ஒரு விசித்திரமான மனிதன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் பாபாவின் வேலைகளையும் காரியங்களையும் கவனித்து வந்தான். ஒருமுறை அவன் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்த பாபாவிடம் சென்று தான் அதில் உட்கார வேண்டியிருப்பதால் பாபாவின் எழுந்திருக்கும்படி கூறினான். பாபா உடனேயே எழுந்திருந்து தாம் அமர்ந்திருந்த ஆசனத்தை காலி செய்தார். அதில் அவன் அமர்ந்து கொண்டான். சிறிது நேரம் அமர்ந்திருந்த பின்னர் அவன் எழுந்திருந்து பாபாவை அமரக்கொள்ளச் சொன்னான். பாபா ஆசனத்தில் அமர்ந்த பிறகு அவன் பாபாவின் விழுந்து நமஸ்கரித்து விட்டு சென்று விட்டான். தாம் அதிகாரம் செலுத்தப்படாதிலும் வெளியேற்றப்பட்டதிலும் பாபா எவ்வளவும் அடையவில்லை. இது நானாவல்லி. பாபா மகா சமாதி எய்திய 13வது நாள் தானும் காலமாகும் அந்த அளவிற்கு பாபாவை நேசித்தான். எளியவை முனிவர்களுடைய கதைகளை கேட்டதும் அவர்களின் சஸ்தங்களில் இருப்பதும் புறந்தில் சாய்பாபாவின் சாதாரண மனிதர் போன்று நடித்தாலும் அவரது செய்கைகள் அவரது அசாதாரண புத்தி சாதத்தையும் திறமையும் காண்பித்தன. அவர் எதை செய்த போதிலும் அவைகள் அடியவர்களின் நன்மையை கருதி செய்யப்பட்டன. தமது அடியவர்களுக்காக சுவாச நியமத்தையோ அல்லது எத்தகைய வழிபாட்டு முறைகளோ அவர் வகுத்துரைக்கவில்லை, அல்லது எந்தவித மந்திரத்தையும் அவர் காதில் அவர் ஓதவில்லை. எல்லா புத்திசாலித்தனத்தையும் விட்டொழித்து விட்டு எப்பொழுதும் சாயி சாயி என்று ஞாபகமிட்டுக் கொள்ளும்படியாக அவர்களிடம் கூறினார். இதை செய்வீர்களானால் உங்களது கட்டுக்கெல்லாம் விடுபட்டு விடுதலை அடைவீர்கள் என்று உரைத்த 5 நெருப்புகளிடையே அமர்தலும் யாகங்களும் பிராணங்களும் அஷ்ட யோகமும் அந்தணர்களால் மட்டும் இயல்வதாகும். மற்ற வகுப்பினருக்கு அவைகளால் எவ்வித பலனும் இல்லை. மனத்தில் தொழில் நினைப்பதாகும். எண்ணமின்றி அது ஒரு நிமிடமும் இருக்க முடியாது. புலன உணர்வுக்கு சார்பான பொருளை அதற்கு நீங்கள் அளித்தால் அதை பற்றி நினைக்கும். அதற்கு குருவை அளித்தால் அது குருவை பற்றி எண்ணமிடும். நீங்கள் மிக்க கவனத்துடன் சாயின் பெருமையும் போற்றாலையும் கேட்டீர்கள். இதுவே சாயினுடைய இயற்கையான நினைவூட்டுக் கொள்ளுதலும் வழிபாடும் கீர்த்தனையும் ஆகும். மேலே கூறப்பட்ட மற்ற சாதனங்களைப் போன்று இக்கதைகளை கேட்பது என்பது அவர்கள் கடினமானது அல்ல. இக்கதைகள் சம்சாரம் என்றும் உலக வாழ்க்கை பயத்தை அளித்து உங்களை ஆத்மீக பாதையில் அழைத்துச் செல்கின்றன. எனவே இக்கதைகளை கவனத்துடன் கேளுங்கள், அவைகளை தியானிங்கள், அவைகளை ஜிரானித்துக் கொள்ளுங்கள். இம்முறை பின்பற்றப்பட்டால் அந்தணர்கள் மட்டுமன்று பெண் இனமும் கீழ் குலத்தாரும் தூய்மை அடைந்து புனிதம் அடைவர். நீங்கள் உங்களது உலக கடமைகளை செய்து கொண்டே கவனித்துக் கொண்டே இருக்கலாம். ஆனால் உங்களது மனத்தை சாய்க்கும் அவரின் கதைகளுக்கும் அழைத்து விடுங்கள். பின்னர் அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பது நிச்சயமாகும். இதுவே மிகவும் எளிமையான வழியாகும். எனினும் அனைவரும் ஏன் அதை பின்பற்றவில்லை? காரணம் என்றால் கடவுள் அருளின்றி முனிவர்களின் கதைகள் கேட்கும் ஆர்வம் நமக்கு வருவதில்லை. கடவுள் அருளால் எல்லாம் दया तैसा अनुभव लावी से दया घना ऐसी तुझे माव
निरसावे देशल तरते त्वद्यश कृष्णाने गावे जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा
तत् हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं हेमान् सजन्त यत्र पूर्वे साद्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ते साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्या ईस्यात् सार्वभौमत्सार्वायुषान्त्राधात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंता तुलाते कसेरे स्तवावे अनंता तुलाते कसेरे नमावे अनंता मुखाचा शिनेशेष गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मनी त्वत्पदा नित्यभावे पुरावे तरे भक्ति साठे स्वभावे तरावे जगातारुणी मायताता नमस्कार श्री साईनाथा वसे जो सदा दावया संत लीला इसे अज्ञ लोकान् परे जो जनाला परे अंतरे ज्ञान कैवल्य दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वरालाधला जन्म हा मानवाचा नरासार्थका साधनीभूत साचा धरो साई प्रेमा गळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा धरावे करे सान अल्पज्ञ बाला करावे अमाधन्य चुंबो निगाला मुखे गाल प्रेमे कराग्रास आता नमस्कार श्री साईनाथा सुराधिक ज्यांच्या पदा वंदिताते शुकाधिक ज्यांते समानत्व देते प्रयागादि तीर्थे पदे नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझ्या ज्या पदा पाहता गोप बाले सदा रंगलेचे स्वरूपे मिळाले करी रास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे भवे मोहनी राज हातारे आता नमस्कार श्री साईनाथा ऐसा येई बासाई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तो श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा येई बा काशी स्नान जपा प्रतिदिवशी कोल्हापुर भिक्षेशी निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी निद्रा माहुर देशी ऐसा येई बा झोळे लोमतसे वाम करे त्रिशूल डमरो धारे भक्ता
शोभतो माथा ऐसा ये बात तत्पर तुझाया जे ध्याने अक्षय त्यांचे सदने लक्ष्मी वास करे दिन रजने रक्षसे संकट वारुणी ऐसा रे बाप या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया पूर्णानंद सुखे एकाया लाविषे हरि गुण गाया ऐसा ये बासाई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तू श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा ये बा सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संहार हेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वांत विध्वंसमार्तण्डमीड्यं मनोवागतेतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमग्नार्दितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्ते प्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तेक्तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां नृणां कुर्वतां भोक्तिमुक्ते प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अनेकाश्रुतातर्क्यलीलाविलासै समावेशकृतेषान् भास्वत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सतां विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः सस्तुतं सन्नमद्भिः जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात् सम्पुनीतप्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं श्री साईश कृपानिधेऽखिलनृणां सर्वार्थसिद्धिप्रदा युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान् न्यान्यच्छरण्यं मम सायिरोपधर रागोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुं माययोपतचित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहमर्निशं मुदा शरत्सुधांशुप्रतिमं प्रकाशं कृपातपत्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैवत साईनाथ स्तवैर्मयोपासनिना स्तुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धा अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान्धपरान्धपुञ्जकान् प्रसेद साये सद्गुरोदयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपोतचित्तास् तत्पादसेवनरतः सततं च भक्त्या
संसारजन्यदुनितोर्धवनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ते स्तोत्रमेतत् पठेद् भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेद् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।